0.04% लोकल एक्टर्स को जा रहा है। कितना? 0.004%, मतलब 100 रुपए में 4 पैसे लोकल एक्टर्स को। और लोकल एक्टर सिर्फ लोकल एनजीओ नहीं है, वो लोकल गवर्नमेंट और लोकल इंस्टीट्यूशन भी है, नेशनल गवर्नमेंट भी उसमें आते हैं। तो 100 रुपए में जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, और द volume of the portfolio of the humanitarian aid is $92 billion per annum, और उसमें सिर्फ 4 पैसे नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल एनजीओ को जा रहे थे, जबकि अदर साइड ऑफ द प्लेट 96% कैजुअलिटीज जो है वो लोकल एक्टर्स की हो रही होती है। तो ये हम सब के लिए, ये इस दुनिया के लिए, हर इस सेक्टर के लिए एक लम्हा फिक्र था। फिर ये मूवमेंट बना और उसमें डिसाइड किया गया कि 25% जाएगा लोकल एक्टर को। 2022 में हमने 2021 में कोविड की वजह से ये परसेंटेज 4% पे चली गई। 2022 में हमने फिर इसका तजज़िया किया तो वो घट के फिर 2% पे आ गए। तो इससे हम यह हस करते हैं, और जो हम ग्लोबल एडवोकेसी कर रहे हैं, मैंने फोरम्स पे कहा कि आप 2% और 4% को ना करें, इसको आप ट्रायंगुलेट करें, क्राइसिस ट्रायंगुलेट करें कि लोकल एक्टर्स को वहां पैसे मिल रहे हैं जहां इंटरनेशनल नहीं जा सक रहे। वहाँ वो कोविड की सिचुएशन थी तो लोकल एक्टर ये 4% पे चला गया था, या अफगानिस्तान में क्राइसिस है, या लीबिया में है, या सीरिया में है, या यूक्रेन में है, या इराक में है, तो जहां या सोमालिया है, तो जहां पे दुनिया में क्राइसिस हैं तो मरवाने के लिए लोकल एक्टर्स को आगे किया जा रहा है। So this is a very serious discussion regionally and globally. लेकिन जाहिर है डिसीजन जो हैं वो ग्लोबली लिए जाएंगे, पूरा सेक्टर चेंज होगा। तो उसके लिए हम ग्लोबल लेवल पे एडवोकेसी कर रहे होते हैं, और लोकलाइजेशन एजेंडे या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रिवोल्यूशन के एजेंडे के तहत ये 2 वर्किंग स्ट्रीम ग्रांड बार्गेन में बने हैं, जिसमें हाई टेक्निकल लोग होते हैं और ये नेगोशिएशन हो रही होती। फिर एक दूसरा फिगर मैं आपको बता रहा हूँ कि 92 बिलियन 8 का 60% जो है वो 3 यूएन एजेंसीज को जा रहा है। 28 यूएन एजेंसीज पाकिस्तान में है, नाम भी हमें नहीं आते, कितने हैं, लेकिन उसमें भी फिर 60% मीन्स ऑलमोस्ट $55 बिलियन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, यूनिसीआर और यूनिसेफ को जा रहे होते हैं। और उसके साथ रेड पिलर है जिसको हम IFRC इंटरनेशनल फेडरेशन और रेड क्रॉस, हमारे यहाँ उसका जो विंग है उसको हम PRCS कहते हैं। तो यूएन को हम ब्लू पिलर कहते हैं, ये जो रेड क्रॉस और रिक्रिएशन मूवमेंट्स हैं इसको हम रेड पिलर कहते हैं। तो 99% इस वक्त 98% फंडिंग जो है वो इंटरनेशनल एक्टर, जिसमें से मोर देन 60% ब्लू पिलर के 3 इदारों को और IFRC फैमिली को जा रहे हैं, और लोकल एक्टर को सिर्फ 2%। इस वक्त 2022 का जो फिगर है वो जा रहा है। हमने इस फिगर को इंक्रीज करना है।
और इसके लिए एक आवाज़ हो के हमने एडवोकेसी करनी है। इसलिए हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर NHN के प्लेटफॉर्म से ये एडवोकेसी कर रहे हैं और ये मूवमेंट्स उठा रहे हैं कि ये फंडिंग पोर्शन ज़्यादा हो। दूसरा जो इसमें मामला है पार्टनरशिप का, कि जब पार्टनरशिप हो इदारों के साथ, हमारे लीड पार्टनर हों, तो हम क्या चाहेंगे कि वो किस तरह का पार्टनरशिप हो। तो उस पे भी डॉक्यूमेंट्स बने हैं जिसमें जिसको अप्रूव किया गया। मैं थोड़ा सा आपको यूएन का जो पॉलिसी साजी है तो उसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। यूएन के यहाँ पे हर मुल्क में इदारे होते हैं और उसका सरबराह फिर उसको हम RC या HC कहते हैं, रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर या ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर। जहाँ पे इमरजेंसी होते हैं तो उसको हम उसके पास HC का हेड भी होता है। यहाँ जूलियन है, आप लोगों ने देखा भी होगा, मीटिंग भी की होगी। इसी तरह हर मुल्क में है। फिर इनकी एक जो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है तो उसको ये एग्जीक्यूटिव EDGs कहते हैं, और उसका हेड जो है वो फिर यूएन जो जनरल सेक्रेटरी होता है उसके नीचे होता है। लेकिन पॉलिसी साजी के लिए ओपेक है, इनके ऑपरेशनल पॉलिसी एडवोकेसी ग्रुप होता है, और इंटर एजेंसी स्टैंडिंग कमेटीज होती है जो हर शोबे के लिए पॉलिसी बनाती है और फिर रिकमेंडेशन देती है जनरल सेक्रेटरी को, और फिर उनकी असेंबली उसको अप्रूव करती है। तो हम यहाँ तक गए हैं, ओपेक में हमारे दो साथी रहे। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने एडवोकेसी की। एक हमारे आई कैन मैं फहर से कह सकता हूँ, असमत साहब हमारे 2 साल रहे हैं। एक बांग्लादेश से हमारे दोस्त है रिजा भाई, तो हमने उनके लिए लॉबी की, तो वो 3 साल ओपेक में रहे और ये रिकमेंडेशन हमने उनके थ्रू इंटेलिजेंसी स्टैंडिंग कमेटी को की, और वहाँ से फिर गाइडलाइन आए। उस पे यहाँ मैंने कोई 7 वेबिनार किए हैं NHN के साथ। लोकलाइजेशन, रोल ऑफ इंटरमीडिएटरी, और इसके हर एस्पेक्ट पे, और इंटेलिजेंसी स्टैंडिंग कमेटी के जितने भी गाइडलाइन हैं, ये वेबिनार मैंने खुद कंडक्ट किए हैं NHN मेंबर के साथ। थोड़ा सा हम गिला करते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन जब इंफॉर्मेशन मिलती है और फ्लो होता है तो उसके लिए रिसेप्टिविटी भी चाहिए होती है। हम भी एक सीरियसनेस लेवल आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन अगर NHN की तरफ से आपके लिए कोई वेबिनार अरेंज किए जाए, अगर NHN की तरफ से आपको कोई ऑनलाइन मीटिंग्स अरेंज की जाए तो काइंडली उसको अटेंड कर लिया करें, उसके नोट्स ले लिया करें और उसको अपने कम्युनिके में बयान में शामिल कर लिया करें और अपने साथियों को बताया करें, ताकि हम एक पेज पे हो। अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल होता है। और जितने भी लोगों ने वेबिनार किए हैं और जितने भी हम NHN से ट्रेनिंग करते हैं और जो भी NHN का कुलीग होता है, तो अगर उसको कोई रेम्यूनरेशन मिलता है तो वो वापस वो NHN को डोनेट करते हैं। ये स्पिरिट है। हमारे दोस्त अगर आपको नज़र आते हैं कि वो कोई वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं, वो कोई वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट अगर हम उनको कभी चार्ज भी कर, अव्वल तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन कहीं पे अगर उनको हम 10-20 हज़ार चार्ज कर लेते हैं तो सारे अरसे में ये प्रैक्टिस रही है कि वो उसको वापस NHN को डोनेट करते हैं। सो दिस इज वॉलंटियरिज्म।
वो अपना वक्त निकालते हैं। ये वो लोग हैं, नूर बजीर साहब, इरफान साहब, अजमत और बाकी जो भी हमारे दोस्त हैं, तो वो $200-300 पर डे चार्ज करते हैं। सो जब आपको ये फैसिलिटी मुफ्त में मिल रही होती है तो आप उसको अवेल कर लिया करें काइंडली। आज की ये एक्सरसाइज हम जो करने जा रहे हैं वो इस वास्ते करने जा रहे हैं कि लोकलाइजेशन इज नाउ एन एक्सेप्टेड रियलिटी। फिक्स एंड फिगर के साथ हमने इस एजेंडे को आगे बढ़ाया है और अब जो हमारे इंटरनेशनल एक्टर हैं वो अपने आप को अलाइन करना चाहते हैं लोकलाइजेशन के एजेंडे के साथ और एम्पावर करना चाहते हैं अपने पार्टनर्स के साथ आपको। उसमें अब हमें चाहिए कि उनको सपोर्ट करें, उनको अब इनपुट दे दें, क्योंकि जब पॉलिसी बनती है तो चेंजेस आसान होती है। एक मर्तबा पॉलिसी बन जाती है फिर आपको सालों साल इंतजार करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा रिव्यू करूंगा। 7 डायमेंशन हमने लोकलाइजेशन के अहस किए जिस पे हम मुतफिक हुए कि हमें लोकलाइजेशन कैसे चाहिए, कैसे हम लोकल एक्टर्स को एम्पावर कर सकते हैं या वो हो सकते हैं। तो उसमें बात ये की गई कि जो कंट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है लीड पार्टनर और डाउनस्ट्रीम पार्टनर या और काइंडली ये इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर का मामला खत्म कर दें। जो भी आपको आईपी कहें उनको कहें मैंने प्रोजेक्ट नहीं लेना, आपने हमें या को पार्टनर लिखना है या पार्टनर लिखना है। ये कोई हम ठेकेदार और मजदूर की कहानी अब खत्म हो जानी चाहिए। थोड़ी सी स्ट्रेंथ ले आए, अब हम इतने कमजोर नहीं रहे हैं। सही। सो खुल के कहे लोगों को कि मैं एग्रीमेंट आप रिवाइज करें। सो रिलेशनशिप क्वालिटी के लोकल एक्टर पार्टनर्स के माबेन क्वालिटी रिलेशनशिप होना चाहिए और उसके फिर डायमेंशन तय हैं। ये हर एक पे डॉक्यूमेंट है, तो वो मैं आपको जो नॉलेज प्रोडक्ट होगा ये हमारे वेबसाइट पे भी है, डीआरसी पे भी है, तो आप इससे को देख सकते हैं। और ये दोनों साइड से हो, रिलेशनशिप क्वालिटी दोनों साइड से हो। उस परसों मैं गया हूँ तो एक पार्टनर ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा हम आपका ड्यू डिलिजेंस करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि हम क्या हैं, फिर आपको मंजूर होगा तो हम आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे। ये एक इंटरनेशनल एनजीओ थी। उसने कहा फिर आपको मंजूर होगा और आप वो काम कर सकेंगे, हम दोनों कंफर्टेबली, तो वो हम पार्टनरशिप करेंगे। तो ये रिलेशनशिप क्वालिटी है कि आप एक दूसरे को वैल्यू दें, इक्वल फूटिंग पे उनके साथ वो पार्टनरशिप करें, काम करें। ट्रांसपेरेंसी सिर्फ लोकल एक्टर की ना हो कि कहीं पे यहाँ मामला ये चल रहा होता है कि इसके गोटिंग होती है और ये हमने उठाया है कि यूएन कहता है ये इस पार्टनर ने एम्बेजलमेंट की ब्लैकलिस्ट कर लो, फिर दूसरे घोड़े को ले आ जाता है, फिर तीसरे को ले आ जाता है और जो करने वाला ऊपर बैठा है वो कहता है हमने तो ब्लैकलिस्ट कर दी। भाई मैंने आपने ड्यू डिलिजेंस की थी, आप इसको देख रहे थे, तो 1 रो में ये 3 पार्टनर आपने ब्लैकलिस्ट कर दिए, लेकिन अपने सिस्टम अपने किसी आदमी को आपने हटाया नहीं। तो ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हमने ये तक कहा कि लीड पार्टनर का हमारा बजट उनको पता होता है, हम अपना बजट जो है कम्युनिटी के साथ शेयर करेंगे और ये हमारे साथ अपना बजट शेयर करें। तो एक ट्रांसपेरेंसी, तो क्वालिटी रिलेशनशिप होना चाहिए पार्टनर्स के दरमियान। पार्टिसिपेशन रिवोल्यूशन, ये थोड़ा सा ये एक अलग स्ट्रीम है लोकलाइजेशन से ग्रांड बार्गेन में, जिसको हम पार्टिसिपेटरी रिवोल्यूशन कहते हैं, पार्टिसिपेशन रिवोल्यूशन कहते हैं।
वो टीम ये है जिसके अराउंड एक पूरा ग्रुप बना है और उस पर काम कर रहे हैं कि कैसे कम्युनिटीज को हम लोकलाइजेशन में बात है सिर्फ लोकल एक्टर तक, सीबीओज के लेवल तक, लेकिन कम्युनिटीज को कैसे हम अपने प्रोसेसेस में इंक्लूड करें, उनको पार्टनर बनाएं, उस वर्क स्ट्रीम को हम कहते हैं पार्टिसिपेशन रिवोल्यूशन। कि कम्युनिटीज प्रोजेक्ट डिजाइन का हिस्सा हो, कम्युनिटीज हमारे प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस का हिस्सा हो, कम्युनिटीज हमारे अकाउंटेबिलिटी करे। जिस तरह मैडम अभी कह रही थी कि हम वो चीज़ लेके चले जाते हैं जो उनको ज़रूरत नहीं है। सो कम्युनिटीज को हम एज बेनिफिशियरी नहीं, एज पार्टनर कैसे ला सकते हैं। सो और बाज़ औक़ात हमारे कुछ टीम कम्युनिटी के लिए हो सकते हैं नुकसानदेह हो, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी और हम अपने आप को कम्युनिटीज के सामने अकाउंटेबल ठहराए, इसको पार्टिसिपेशन रिवोल्यूशन कहते हैं। फंडिंग एंड फाइनेंसिंग, इसमें दो चार बातें हैं जो अब हम रेडी पाकिस्तान में एक एग्जांपल सेट कर लिया है हमने कि आईसीआर या एडमन कास्ट, ये कम से कम आप पार्टनर्स के साथ शेयर करें। अगर आपके इदारे हैं तो उनके भी इदारे हैं। 3 महीने का प्रोजेक्ट होता है, उसके बाद उनको अपने ऑफिस चलाने होते हैं। लीड पार्टनर इसके मुताबिक बिल्कुल नहीं सोचता कि इदारा इससे पहले भी है, इसके बाद भी होगा, तो वो क्या करेंगे? जब ड्यू डिलिजेंस को आ जाते हैं तो वो फिर यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ के या डब्ल्यूएचएच के स्टैंडर्ड या कंसर्न के स्टैंडर्ड से हमारे ड्यू डिलिजेंस करते होते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये लोग ये कैसे रखेंगे। तो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होनी चाहिए, इवन ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर में भी लॉन्ग टर्म मल्टी ईयर फंडिंग होनी चाहिए। डाउनस्ट्रीम पार्टनर को आईसीआर शेयर करना चाहिए, उनको ड्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट शेयर करना चाहिए, उनकी सैलरीज में ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए। ये इस स्ट्रीम का हिस्सा है और उस पर पूरा डॉक्यूमेंट है, इंटेलिजेंस स्टेयरिंग कमेटी की गाइडलाइन है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। दूसरी बात आ जाती है कैपेसिटी की। कैपेसिटी के अराउंड पूरा ग्लोब डिवाइड कर के हम लोगों को ट्रेन करते हैं, फिर आईएनजीओ को वो लोग चले जाते हैं, यूएन को लेके चले जाते हैं। तो हमारी तो कैपेसिटी है, फिर हमारे पास लोकल विजडम है। ये जो सैलाब या डिजास्टर ये आज का फिनोमेना तो नहीं है, ये तो हजारों साल से आ रहे हैं और लोग उसको डील कर रहे थे। तो अब कैसे अगर ड्राउट है तरपार करने, तो वजीर साहब को ज्यादा पता होगा कि लंदन में बैठे किसी यूएन एजेंसी के या एनजीओ के बंदे को पता होगा कि तरपारकर में ड्राउट जब आता रहा है सदियों से, तो उसको कैसे डील किया जा रहा है। तो हमारे पास लोकल नॉलेज भी है, लोकल कोपिंग मैकेनिज्म भी है और लोकल कैपेसिटीज भी है, इसको एक्नॉलेज किया जाए। तो फिर हमने कैपेसिटी डेवलपमेंट का लफ्ज खत्म किया है। अब आपको और कहीं पे भी आपको मिले, आप उनको कहें कि इसको चेंज करें। अब बात होगी कैपेसिटी स्ट्रेंथन की। कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग से भी ज्यादा कैपेसिटी शेयरिंग का लफ्ज हम इस्तेमाल करें। आपकी भी कैपेसिटी है, आपके पास हाईटेक सिस्टम है, मेरे पास लोकल नॉलेज, मेरे पास एक्सेस है, दोनों टेबल पे ले आते कैपेसिटी शेयरिंग करें या फिर कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग होगी। कैपेसिटी है लेकिन उसको थोड़ा सा आप जो मॉडर्न नॉलेज है उसके साथ स्ट्रेंथन। कैपेसिटी डेवलपमेंट के वर्ड से बिल्कुल इनकार करें। डेवलपमेंट से हमारी इस तरह नहीं है कि कोई कैपेसिटी नहीं है, ये हम चलाते रहे। अभी फ्लड में यूएन आया है 6 महीने बाद, आईएनजीओ को लगे हैं 3 महीने। हमने फर्स्ट डे से काम शुरू किया। कैपेसिटी है, लोगों ने खुद शुरू किया, ये है कैपेसिटी, हम संभाल सकते हैं, हम संभाला है। इतने डिजास्टर को लोकल एक्टर्स ने संभाला है, तो ये दिमाग रखिए। दूसरा है कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, कि जितने भी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है
उसमें लोकल एक्टर की ड्यू रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वो प्रोविंशियल लेवल पे हो, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, वो नेशनल लेवल पे हो, वो रीजनल लेवल पे हो। पाकिस्तान में हम खुशकिस्मत हैं, हमारे पास NHN है, लेकिन हर मुल्क में NHN नहीं है। वहाँ लोकल एक्टर्स को मीटिंग तक के लिए नहीं बुलाया जाता, और जब बुलाया जाता है तो उनको इंग्लिश नहीं आती, गोरे बैठे हुए होते हैं, तो उसकी कॉन्फिडेंस ही नहीं होती कि वो गोरों के साथ बात करे, और बात करना भी चाहे तो उसको इंग्लिश नहीं आती होती। तो हमने कहा कि आप जिस मुल्क में भी जाएं, लोकल लैंग्वेज वालों को ले और लोकल एक्टर्स को रिप्रेजेंटेशन दे। आज मैं फख्र से कह सकता हूँ कि फ्लड आया है तो पीडीएमए ने को हमने नॉमिनेशन दी है NHN की। अभी सिंध से, बलूचिस्तान से हमने उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल के दोस्त नॉमिनेट किए हैं कि ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म में होंगे। सिंध से भी हुआ है, और हमने अपने दोस्तों को इनकॉर्पोरेट किया है। नेशनल लेवल पे हम HCT का हिस्सा हैं, पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा रहे हैं। आप जो भी कमेटी उठाए, सनाइस की गवाह है, बाकी दोस्त भी गवाह, जो भी आप UN की कमेटी उठाए, NHN उसका पार्ट एंड पार्सल रहा है। लेकिन ये हमने खुद स्ट्रगल की है, ये उन्होंने हमें नहीं। तो ये पूरी दुनिया में इस तरह होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट, क्योंकि जब आपको इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होती, जब आपको पता नहीं होता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, क्या चल रहा है सेक्टर में, तो आप तो कहीं एक कोने में बैठे होते हैं। आपको प्रपोजल लिखना आता भी होता है तो आपको पता नहीं होता कि प्रपोजल दे किसको। तो जब आपको पता हो कि पाकिस्तान को कौन कौन फंड कर रहा है, किस किस सेक्टर में फंड कर रहा है, उस सेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप अकॉर्डिंगली उसके लिए प्रपोजल लिख सकेंगे। और आप, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन इज पावर, और वो आपको कोऑर्डिनेशन से मिलती है, कम्युनिकेशन से मिलती है। तो जितना इस गैप को हम नैरो डाउन करेंगे, हमें फंडिंग अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नज़र आएंगी, हम ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी आर फार अहेड। लेकिन पूरी दुनिया में ये मामला नहीं है, और हम चाहेंगे कि हम अपने दोस्तों को और भी कनेक्ट करें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल इदारे को भी पता हो कि मेरे डिस्ट्रिक्ट को जो फंड आ रहा है वो किस चैनल के थ्रू आ रहा है, और अगर आ रहा है तो सबसे पहले मैं क्वालिफाइड हूँ, क्योंकि मैं ही यहाँ बैठा हूँ। रेडी पाकिस्तान में हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया है कि अगर कोई भी इदारा प्रपोजल लेगा, वो उस डिस्ट्रिक्ट के पार्टनर से, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ होंगी, वहाँ उनके साथ पार्टनरशिप करेगा। इसके अलावा हम उनको फंडिंग नहीं देंगे, उनको 5 to 10 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स भी हम दे रहे हैं अगर वो लोकली प्रेजेंट। ये हम सिस्टम को प्रो लोकल बना रहे हैं, तो इसमें हमें आपकी ताउन की जरूरत है। आप ताउन करेंगे, हम सिस्टम बनाएंगे, जब सिस्टम बना जाएंगे फायदा आपको होगा, हम सबको होगा। तो इसको समझने की कोशिश करें, और इन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म में हिस्सा लें और क्वालिटी कंट्रीब्यूशन करें। फिर विजिबिलिटी आ जाती है। विजिबिलिटी काम लोकल एक्टर्स कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट वो कर रहे होते हैं, जान और माल के नुकसान उनके होते हैं, सेहत के नुकसान उनके होते हैं। जब प्रेजेंटेशन की जाती है तो लीड पार्टनर कहता है मैंने बड़ा अच्छा काम किया, फिर कोई वो ना लोगो लगाते हैं, ना उनकी ईडी को बुलाते हैं, ना उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है, और जब बुरा काम होता है तो कहता है वो लोकल इदारा करप्ट था। तो इस तरह नहीं चलेगा। अगर हम फेलियर्स हमारे साथ शेयर हो रही है और उसके लिए हमें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो सक्सेसेस के भी इक्वल से ज्यादा हम हकदार हैं, लेकिन हमें इक्वल शेयर चाहिए। और
बाकायदा हर रिपोर्ट में और हर जगह पे लोकल इदारे को एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। तो अगर कोई पार्टनर आपको, लीड पार्टनर ये कहें कि आप अपना लोगो ना लगाएं, आप उसको अपने वेबसाइट पे ना लगाएं, चैलेंज करें। पॉलिसी सबसे अहम मामला, कल भी बात हुई, लेकिन प्रैक्टिसेस निकलते हैं पॉलिसी। जब तक आप पॉलिसी लेवल पे नहीं जाते ना और पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस नहीं करते, तो बाकी चीजें तो मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन वेरी करती। आयशा का मिजाज पार्टनरशिप का होगा तो उस मिजाज से ये पार्टनर के साथ डील करेगी। कल कोई दूसरा आ जाएगा, उसका मिजाज दूसरी तरह से होगा। परसों तीसरा आ जाएगा, उसका मिजाज कोई और तरह का होगा। तो वो लेकिन जब एक चीज पॉलिसी और सिस्टम में आ जाता है, फिर पर्सन, इंडिविजुअल का रोल फिर भी रहता है, एटीट्यूड और बिहेवियर का रोल फिर भी रहता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हल हो जाती है। तो हमें हर जगह पे जब पॉलिसी की बात आती है तो उसमें अपने इश्यूज को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। पॉलिसी जब बनती है फिर वो सालों साल लगते हैं। इस वक्त हम इंतहाई अहम मोड़ पे हैं इस सेक्टर के। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये सेक्टर मारिज वजूद आया है, इसने शेप पकड़ी है। 1930 था। आज हम बैठे हैं करीबन 90 साल बाद, करीबन 90 साल बाद अब हम ये सेक्टर चेंज होने जा रहा है, ग्लोबली चेंज होने जा रहा है। तो 90 साल लगे। अब ईएडी की पॉलिसी हमने 12 साल में निकाली, हम उसको दोबारा से करेंगे तो और 12-15 साल लग जाने हैं। सही। तो जब पॉलिसी बन रही होती है तो वो एक निहायत अहम मामला होता है और उसमें हमने अपने वॉइसेस को, अपने मामलात को इंश्योर करना होता है। और ये हम थ्रू NHN का जो वतीर आ रहा है, जो कामयाबी मिली, वो है पॉजिटिव एंगेजमेंट। ये नहीं है कि बाहर आप इस पोर्टल के किसी ऑफिस के बाहर अगर हम ईडी के बाहर धरना देते, बिलबोर्ड उठाते, चीखते चिल्लाते, वो हमें सेक्रेटेरिएट से ही आउट कर देते, पुलिस वालों को कह देते लाठीचार्ज करो। अगर हम इन धीमे के साथ ये वतीरा रखते तो कोई तो हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो थे, वो गेट तक आने नहीं देते। लेकिन हमने पॉजिटिव एंगेजमेंट की पॉलिसी इख्तियार की। किसी तौर हमने अपने आप को वो टेबल तक ले गए, तो किसी तौर अपने आप को टेबल तक ले जाए। अब हमारे साथ अब जो हम टेबल तक चले गए हैं, इंडी में इज नाउ आवर पार्टनर, यूएन इज आवर पार्टनर, INGOs आर आवर पार्टनर। तो जब आप टेबल पे जाते हैं, आप उनकी लिमिटेशन भी समझ लेते हैं, आप अपनी अर्जदाश भी उनको पेश कर लेते हैं, और फिर बात आ जाती है निगोशिएशन की। तो नेगोशिएशन के थ्रू फिर आप ये ट्राई करते हैं कि टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ दैट। सही है। तो ये तरीका हमने अडॉप्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब गए हैं। हमने ग्लोबल कैपिटल्स को टच किया है, हमने हर पॉलिसी फोरम को टच किया है। आज हम ये मौका आपको फराहम करते हैं। दिस इज अ टेस्ट केस कि हमारा एक लीड पार्टनर अपनी पॉलिसी के लिए, पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के लिए आपसे इनपुट मांगेंगे, तो आपने क्वालिटी इनपुट्स देने हैं। पॉलिसी बनेगी इनकी, हम उनको प्रोजेक्ट करेंगे, फिर हम हर पार्टनर से कहेंगे ये देखें ना, ये पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो उनका है ना, मॉडल क्रिएट हो जाएगा ना। एविडेंस बेस्ड एडवोकेसी करते हैं ना हम, इस तरह आपको भी करना चाहिए।
पहले प्यार प्यार से कहेंगे, है ना, मोटिवेट करेंगे, फिर एक दिन आ जाएगा उनको कहेंगे इस तरह तो हम काम नहीं करेंगे। वो जो पार्टनरशिप फ्रेमवर्क उनके साथ हमने बनाया है वो हमारा स्टैंडर्ड है, लेकिन ये हम मिलकर कहेंगे। वो ये वाला मामला हम छोड़ दें उदाहरण कि एक पार्टनर अगर डिक्लाइन करता है तो दूसरा आ जाता है यार मैं तो माइनस कॉस्ट पे भी पार्टनरशिप के लिए तैयार, इसने हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया। सही। सो इंशाल्लाह वो दिन आ जाएगा, फिर हम खुद पार्टनरशिप फ्रेमवर्क तय करेंगे यूएन के साथ, दीगर इदारों के साथ, और कहेंगे हम सिर्फ इस पार्टनरशिप के थ्रू काम करेंगे। सो विद दिस फर्स्ट आई रिक्वेस्ट आसमा, आसमा का है कि आयशा का है? अच्छा तो फिर तो अच्छी बात है कि हम चाय पीकर, लेकिन अगर हम चाय पे कड़े ना हो और अपने अपने कप लेकर वापस आ जाए टेबल पे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सही। तो अगर हम 15-20 मिनट में चाय लेकर आ या बहुत सी चीज़ों पे इनको किस तरह एड्रेस किया जा सकता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको थ्रू द डू नो हार्म फ्रेमवर्क एड्रेस करें। जहाँ पे आप बात कर रही थी कंपैशन की, देखिए जी कंपैशन अगर इस हॉल में बैठे हुए हर इंसान में या हर इदारे में काम करते हुए इंसान के पास ना होता तो वो मोस्ट प्रॉब्ली इस लाइन ऑफ वर्क को चूज नहीं करते। आई दैट इज द प्रिंसिपल आई गो बाय। विजन और मिशन अगर आपका अलाइंड नहीं है, ज़रूरी नहीं है हम सब एक ही लेंस से देख रहे हों कि हमने दुनिया में जो तब्दीली लानी है, जो बेहतरी लानी है, उसको करने का एक ही तरीका है। उसको करने के काफ़ी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। तो अगर आपका विजन और मिशन मिलता है तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें सही डायरेक्शन में मूव करती हैं। एंड आई थिंक फिर आपका वो लेंस या जो कंपैशन अप्रोच है वो भी कॉमन हो जाती है। सो दैट्स जस्ट अ स्मॉल रिस्पॉन्स टू दैट। जो आपका क्वेश्चन था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, प्रोसेस ओरिएंटेड और टारगेट ओरिएंटेड होने। आई थिंक ये जंग जारी रहती है और हर जगह जारी रहती है। कुछ जगहों पे आपको फंडिंग ऐसे मिलती है कि आपको कहा जाता है कि नहीं जी ये टारगेट है और आपने पूरा करना है, और स्पेशली जब हम ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं अक्सर बल्कि बेशतर इदारों का ये होता है कि हम अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लें। एंड वी ऑल नो कि उसके अंदर काफ़ी प्रोसेसेस और चीज़ें जिस तरह से कम्युनिटी डेवलपमेंट इन द लॉन्ग रन की जा सकती है वो नहीं होती। हम इसको एड्रेस करते हैं। हम मैं ये नहीं कह सकती कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम कम्प्लीटली ये नहीं करते। देर आर टाइम्स के टारगेट्स पे पुश आता है एंड आई ओन दैट कि हम भी कभी कभी पार्टनर्स को कहते हैं कि नहीं जी ये टारगेट है इसको ज़रूर पूरा करें। इसको आप एड्रेस कैसे कर सकते हैं? मैं आपको एग्जांपल सिर्फ ये दे सकती हूँ कि जहाँ पे हमने 2010 में फ्लड्स में जिन डिस्ट्रिक्ट्स में या जिन इदारों के साथ काम करना शुरू किया था, अभी 12 ईयर्स फ्लड्स हो गए। हम अभी भी उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस और उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो WHH ने पाकिस्तान में यूँ नहीं किया कि हमें एक प्रोजेक्ट इधर मिला, एक प्रोजेक्ट इधर कर लिया, दूसरा उधर मिला, दूसरा उधर कर लिया। हम कोशिश करते हैं कि हम कॉन्सेंट्रेटेड काम, लॉन्गर टर्म काम और डेवलपमेंट फंडिंग के साथ काम ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स के अंदर है, लेकिन वी लेयर इट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट फंडिंग। तो वो लेयरिंग हम साथ साथ करते रहे हैं और कर रहे हैं। अभी भी हम लोगों ने रिसेंट जो एक्सपेंशन की है उसके अंदर भी हम लोग का गोल ये नहीं था कि हमारे पास पैसे आ गए तो हम खुद रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दें। फिर हमने कुछ INGO में भी फंडिंग जो है वो ट्रांसफ़र की, क्योंकि वो उस एरिया में ऑलरेडी मौजूद थे और शायद वो बेहतर इम्पैक्ट आता उस फंडिंग का। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जहाँ भी जाएं एटलीस्ट विद 15 ईयर डेवलपमेंट, 10 to 15 ईयर डेवलपमेंट एजेंडा जाएं और उधर जाके फिर 15 साल तक कम से कम काम करें। तीसरा आपका क्वेश्चन सिस्टम्स के ऊपर था और ये मैंने पूरा नहीं लिखा तो मैं आपसे सॉरी टी ब्रेक। सिस्टमैटिक अप्रोच जो WHS का अगर हम स्ट्रेटजी को देखें, प्रोग्राम स्ट्रेटजी, तो उसमें हम सिस्टमेटिक अप्रोच की इस तरह बात करते हैं। हमारे प्रोग्राम पिलर्स हैं और हम
जितनी भी स्ट्रेटजी का टाइम होता है उसके मुताबिक उसको डिज़ाइन किया जाता है और उसमें सिर्फ एक एलिमेंट को नहीं देखा जाता। मसलन अगर हमारे 3 पिलर हैं, एक हमारा ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस का है, दूसरा फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी का है और तीसरा सिविल सोसाइटी कॉपरेशन और एम्पावरमेंट का है। तो इन तीनों एरियाज में हम सिस्टम के तौर पे काम करते हैं और डब्ल्यूएचएच के पास और उनके पार्टनर के पास इनकी डिफरेंट एक्सपर्टीज है जो एक दूसरे के साथ क्रॉस लर्निंग और नॉलेज शेयरिंग होती है। Well, I think I'll just add on to that very quickly. पहली बात है कि जो हमारी स्ट्रैटेजी है, जो प्रोसेस है, वो हमने इंडिविजुअली आइसोलेशन में नहीं डेवलप किया। स्ट्रैटेजी भी जो है वो पार्टनर लेड थी। हमने कोशिश की कि पार्टनर लेड ज़्यादा से ज़्यादा हो और पार्टनर इन्फॉर्म्ड हो। जहाँ तक आप सिस्टम्स चेंज और सिस्टम्स अप्रोच की बात करते हैं, आई थिंक रेडी पाकिस्तान इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मल्टीपल क्राइसिस के साथ अफेक्ट होता है, थ्रू आउट होता है। तो जो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस की इन्वेस्टमेंट है, जो स्पेशली जो एनएससी मेंबर्स हैं रेडी पाकिस्तान के अंदर, और उसके अंदर डब्ल्यूएचएच ने भी इसलिए कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम चेंज की ज़रूरत थी। तो जब हम एंटिसिपेशन और अर्ली एक्शन की बात करते हैं, और अभी आई नो सेकेंड हाफ में और कल हम रेडी पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे, तो जो ह्यूमैनिटेरियन इकोसिस्टम को चेंज करने की बात है, जिसमें आई थिंक हम काफ़ी हद तक एटलीस्ट पाकिस्तान लेवल में हलचल बनाने में हो गए हैं कामयाब। आई थिंक ये वाली वो चीज़ें हैं जो कि आप इन द लॉन्गर टर्म यू स्टार्ट कनेक्टिंग डॉट्स टुगेदर। तो सिस्टम्स के ऊपर जहाँ तक बात है, वो आई थिंक इस तरह की रेडिकल इनोवेटिव आइडियाज़ जो कि चीज़ों को बेहतर से बेहतर की तरफ, बेहतरीन की तरफ लेकर जा सकें, उनके अंदर इनपुट हम कोशिश करते हैं कि हम दें, लेकिन अगेन वी फील कि हम लोग हर कुछ करने के लिए बेस्ट पोजीशन नहीं है। तो जो हमसे बेहतर पोजीशन एक्टर्स होंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं कि वो फिर आगे आए। मुझे अपनी हैंड राइटिंग अब समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, पार्टनर सोल्यूशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रिपेयरनेस और डेवलपमेंट पर बात हुई थी, यहाँ पर किसी ने की थी। इस तरह के इनिशिएटिव्स हमारे शुरू से चल रहे हैं, और अभी जो ज़्यादा रेडिकल इनिशिएटिव है वो टुगेदर का है। और उसका बेसिक पर्पस भी यही था कि हम पार्टनर्स के साथ, पार्टनर्स को सिलेक्ट करें, पार्टनर्स के पास जाएं, वो हमें असेस करें, हम उनके साथ बैठें, वो भी देखें कि वो हमारे साथ काम करना उनको लगता है कि ठीक होगा या नहीं होगा। तो वो जो पूरा प्रोसेस था, जिसमें हमने उनकी फिर कैपेसिटी शेयरिंग प्लान्स बने हैं तमाम पार्टनर्स के, सिर्फ टुगेदर के पार्टनर्स के नहीं, और फिर उसके अलावा आगे फिर कैपेसिटी एक्सरसाइजेज हो रही हैं। जो ज़्यादा फोकस है वो एक्सपोजर विजिट्स के ऊपर है और उनकी इंटीग्रेशन के ऊपर है, नॉट ओनली एट द नेशनल लेवल बट एट द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। जिस अभी रिसेंटली वो तमाम पार्टनर्स जो हैं जर्मनी गए थे, वहाँ पर हमने उनकी वेरियस डोनर्स के साथ डोनर में भी मीटिंग करवाई है कि हम, जो हमारा रोल है एज एन इंटरमीडियरी, कि हम पार्टनर्स को कैपेसिटेट करें कि वो भी आके डायरेक्ट डोनर्स के साथ एक्सेसिबल होके अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर भी करें, बात भी करें और एडवोकेसी भी कर सकें। तो वो फिर ये एक इनिशिएटिव ऑलरेडी चल रहा है, और हम अपना जो पार्टनरशिप फ्रेमवर्क रिवाइज कर रहे हैं, 50% ऑफ इट इज़ बेस्ड ऑन जो हमारी फाइंडिंग्स टुगेदर प्रोजेक्ट के अंडर हैं। उसको कल हमारे साथ बात भी कर रहे थे, हम एज ए नेटवर्क रजिस्टर करवाने की भी कोशिश करेंगे, करवा लेंगे इंशाल्लाह। तो दूसरा था जी, ये नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम बलूचिस्तान से, यहाँ से आपने बात की। जी जी जी, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इंडिविजुअली इस पर बेस्ट पोजीशन हूँ बात करने के लिए, क्योंकि हम अगर लेकिन एट द टॉप ऑफ माय हेड, क्योंकि ऑफ कोर्स एक कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्टली एक्सरसाइजेस होती हैं, वी अंडरस्टैंड कि आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाएँ, बट आई बिलीव कि वो ओवरऑल बजट को देख के और कंस्ट्रेंट्स को देख के कुछ डिसीजंस हुए थे। कोई आपसे अगर इंडिविजुअल रिक्वेस्ट है, तो आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, मैं आप लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये ना सोचा करें कि आप इन पर्सन ही आके मिलेंगे तो इन पर्सन ही काम हो सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन से यू कैन रीच आउट एवरीवेयर। ज़रूर ऑनलाइन मीटिंग्स की रिक्वेस्ट किया करें, ऑनलाइन सेशंस भी बहुत सारे हो रहे हैं, ट्रेनिंग सेशंस भी बहुत होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट भी किया करें। तो दैट्स जस्ट समथिंग फ्रॉम माय साइड। बाकी मैं मेरे ख्याल से भाई जो बात करना चाह रहे हैं वो सब दोस्तों के लिए ये है कि हम जो मार्जिनलाइज एरिया हैं, खसूसी तौर पर बलूचिस्तान और इसी तरह एजेकी या जीबी, लेकिन बलूचिस्तान चूंकि मल्टीपल क्राइसिस को फेस कर रहा है और अर्थ से
दराज से वहाँ एक्सेस के इशू थे, तो जो डेवलपमेंट टेस्ट खैबर पख्तूनख्वा में था या पंजाब में या सिंध में, वो बलूचिस्तान थोड़ा सा रह गया है। तो अगर हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेट करें बलूचिस्तान को और डोनर भी उसको फोकस करे, INGO भी फोकस करे, यूएन एजेंसीज भी उनको तवज्जो दें, तो ताकि उसको एटफार जो हमारे मार्जिनलाइज और बैकवर्ड रह गए हैं, तो उसको एटफार कम अज कम हम ला सके। ट्रक सही है, तो इंशाल्लाह सब मिलकर कोशिश करेंगे और ताकि वो हो जाए। थैंक यू जी। ये AGP और गिलगित बल्तिस्तान में मुझे हर मीटिंग में लोग कहते हैं, और ऐसी बात नहीं कि हम वहाँ पे काम नहीं करना चाहते, लेकिन अगेन हमारे वहाँ पर 3 अलायंस पार्टनर्स एक्टिव हैं, मौजूद हैं, वो उधर काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं। हमें अभी तक फील नहीं हुआ कि हमारे उधर चले जाने से चीज़ शायद बेहतर हो जाएगी। हम लोग ये करते हैं कि अगर उनको कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए हो तो हम वो उनको दे देते हैं। जिस तरह आप हैं, आपका इदारा है, आप लोगों ने कल कार्ड शेयर किए थे, मैंने वो फ़ौरन उस ग्रुप में आगे कनेक्ट कर दिए थे कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को आप प्लीज़ रीच आउट करें, ये लोग जो हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो वो फिर मीटिंग्स और चीज़ें हम के साथ डिस्कशन और लिंकेज डेवलपमेंट में उसमें हम आपको ज़रूर फैसिलिटेट कर सकते हैं। प्रपोजल डेवलपमेंट हुई है, कोई ऐसी कैपेसिटी का इनिशिएटिव है जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, उसमें यू आर मोर देन वेलकम। बट अगर मैं ये कहूँ नहीं जी हमारे उधर चले जाने से ज़रूर डिफरेंस हो जाएगा, तो बिकॉज वहाँ पे 3 अलायंस के पार्टनर्स ऑलरेडी हैं, तो हमने अभी इसलिए वहाँ पर एक्सपैंड करने का नहीं सोचा। फंडिंग सबको पता है लिमिटेड है, तो जहाँ पर हम ऑलरेडी हैं हम सोचे थे उधर कर रहे हैं। स्पेसिफिकली भी हमारा बहुत ज़्यादा फोकस करंटली हमने बलूचिस्तान की तरफ शिफ्ट किया हुआ है। बट मैं ये नहीं कह रही हम कभी वहाँ नहीं आएंगे, अल्लाह करे हमारे आने की ज़रूरत ना पड़े वहाँ पर। बट ये है कि जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन है मैं आपको उनके साथ फिर कनेक्ट करवा दूँ। अच्छा जी, ये लॉन्ग टर्म बात हो रही थी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग और ओवरऑल किस तरह से वहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं और कम्युनिटी कैसे इंगेज करते हैं। आई थिंक जो अब हम लोग रिसेंटली एक मोडालिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो पीपल फर्स्ट इम्पैक्ट मेथड की अप्रोच है। पहली बात तो ये है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग प्रोजेक्ट्स खुद से डिज़ाइन नहीं करते हैं। हमारे जो पार्टनर्स हैं, अगर आप उनसे इंडिविजुअली भी बात कर लें, वी ट्राई कि हमें कॉन्सेप्ट या आइडिया पार्टनर से आए और पार्टनर्स ने उसको कम्युनिटी के साथ बैठ के डेवलप किया हुआ होता है, बेस्ड ऑन नीड होता है। तो हम लोग आइडिया खुद से डेवलप नहीं करते, पार्टनर की तरफ से आता है, फिर उस आइडिया के लिए हम फंडिंग हंट करते हैं। हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि हमें जर्मन गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट फंडिंग मिलती है, तो हम उन आइडियाज़ को पिच कर सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड था कि हम लोग रीजनल लेवल पर पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करने के लिए ग्लोबल स्ट्रक्चर पर क्या क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं। आई थिंक जो आजकल हमने बहुत ज़्यादा वोकली WHO ने स्पेसिफिक एडवोकेसी स्टार्ट की हुई है वो डीकॉलोनाइजेशन ऑफ एड पे है। और उसकी हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब डोनर्स आते हैं और बिजनेस केसेस आते हैं, वो आते हैं अपने एक एजेंडा और अपने एक आइडिया के साथ, और उसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए से फंडिंग आपको देना चाह रहे होते हैं, which we feel is not the best way of transferring aid if it is not addressing the needs of communities the people say they're working for need to be addressed। तो जो डीकॉलोनाइजेशन ऑफ एड है उसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा फोकस है। दूसरा जो हमारी ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जो हर साल लॉन्च होती है, पिछले 20 ईयर्स से लॉन्च हो रही है, उसके ऊपर भी हम लोग उसको यूरोप लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और फिर इंडिविजुअल जिन जिन कंट्रीज़ में हम काम कर रहे हैं उसको लॉन्च करते हैं। पाकिस्तान में भी हर साल लॉन्च होती है। फरवरी में साल दोबारा 2022 की रिपोर्ट हम पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ पर वेरियस स्टेक होल्डर्स भी आएंगे। तो आई थिंक दीज आर स्मॉल स्टेप्स और इनिशिएटिव जो हम ले रहे हैं कि हम ओवरऑल पावर स्ट्रक्चर को किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। आई थिंक मैंने मोर और लेस सब पॉइंट्स एड्रेस कर लिए। छोटी मोटी जो सजेशंस थी वो मैंने अपने पास नोट कर ली हैं, वो फिर हम अपने डॉक्यूमेंट में डाल देंगे। इससे पहले कि हम प्रेजेंटेशन आगे मूव करें, आई थिंक थोड़ा सा ग्रुप अप कर लेते हैं। मैंने बहुत बोल लिया, आप लोगों ने बहुत सुन लिया, अच्छी बात ये होगी कि हम आप लोगों से थोड़ा सा ले लें। इससे पहले कि वी मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आगे हम पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की ही कुछ की हाइलाइट्स आपको शेयर करना चाह रहे हैं। आप सबके
टेबल्स पे फ्लैश कार्ड्स पड़े हुए होंगे। सो आई वुड वांट कि आप तमाम लोग अपने ग्रुप्स के अंदर से हमें 3 रिकमेंडेशन अगर दे सकें कि एज अ लीड ऑर्गेनाइजेशन और एज एन इंटरमीडियरी, जो कि हम ज़्यादा टर्म यूज़ कर रहे हैं विद इन WHH, एज एन इंटरमीडियरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आप उस इंटरमीडियरी ऑर्गेनाइजेशन में देखना चाहते हैं, और कौन सी 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आप उनमें बिल्कुल नहीं देखना चाहते? तो अगर प्लीज हम 10 मिनट्स ले लें, और अगर अपने ग्रुप्स में आप ये कर लें, फिर हम 2-2 कार्ड्स हर टेबल से सुन लेंगे जो देखना चाह रहे हैं और जो नहीं देखना चाह रहे, और बाकी कार्ड्स हम कंपाइल करके अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर देंगे। इसमें आप जरा लिख लें जी कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। ऐसे ही चाहिए और क्या कैसा पार्टनर नहीं चाहिए। उसकी खूबियां अगर लिखेंगे तो आसानियों की नाम ना नहीं, दोनों या खामियां जो आप समझते हैं। तो टास्क सबको क्लियर है ना? मशवरा करके तो 10 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, उसके बाद फिर सीखने में जो पॉइंट मुझे लग रहा है वो ये है कि यहाँ एक तो ट्रांजिटिव ट्रस्ट बेस्ड जो है पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ हमें एक प्रॉपर सिटिंग के साथ और प्रॉपर जो है उनके साथ बैठ के मशावरत के साथ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो है उनके ऊपर बात करनी चाहिए, और लॉन्ग टाइम जो है वो पार्टनर्स के साथ जो है उन्हें देखना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी जो फोकस्ड हैं पार्टनर, उनके साथ जो है वो हमारे साथ मतलब हमारे मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं उनकी सिटिंग्स होनी चाहिए, और तमाम पार्टनर्स की कैपेसिटी बिल्ड होनी चाहिए टुवार्ड्स प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्राम क्या है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। थैंक यू सो मच। national and district and provincial level and can influence the policy decisions from the grassroots level. तीसरा हमारा पॉइंट ये था कि जी ऑर्गेनाइज एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंटेशन तो सब कर लेते हैं, लेकिन जब आप लोकल ऑर्गेनाइजेशन की सिलेक्शन करते हैं तो बेसिकली यू आर इंश्योरिंग द सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्रीज ओनरशिप की बात होती है, क्योंकि जब व्हेनेवर यू सेलेक्ट द लोकल पार्टनर्स दे आर द मोस्ट रिस्पांसिबल टू द लोकल कम्युनिटी वी आर dealing, and then sustainability can itself be ensured by engaging the local partners. Then we have 3 points that why they should not be selected. Operational strength is also weak for all those that are at the transitional stage and they are not having so much projects. So their standards are not met for the agreement. The legal requirements are not met because they are non-profit organization. It is impossible to pay the heavy pieces of different registrations like we have in Pakistan. So definitely they are unable to survive to get those registrations. That is another bottleneck for them. Then limited sector and thematic expertise with well segregated organogram, whereas decentralized approach is maximum. So this is basically our point. हमारे के पास जो चेक करा तो उसमें जो स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी स्ट्रेंथ भी है माइक यहाँ पे जो वीकनेस है वो वल्नरेबल जो कम्युनिटीज है वो जब चर्च का जो फोकस है उस पे एक्चुअली नहीं है। जिस तरह यहाँ पे भी बैन की गई बलूचिस्तान हो गया एक्सपर्ट वहाँ पे वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, हमें अपने मजबूत पे काम करना चाहिए, हमें ज़्यादा फोकस वल्नरेबिलिटी जो कम्युनिटीज है उस पे होना चाहिए। दूसरा जो है वो है पार्टनरशिप, न्यू ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी पार्टनरशिप होना चाहिए ताकि नई एक्सपीरियंस और नई ऑर्गेनाइजेशन सामने आ जाए। परवेज अब्रोह कार्ड सेंटर हमारे जो टेबल पे जो डिस्कशन हुई थी, कुछ पॉइंट्स जो जो गुड प्रैक्टिसेस है वो हमने लिखी है। ट्रांसपेरेंसी जो 2 वे होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी 2 वे होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी 2 वे होनी चाहिए, और शेयर्ड सक्सेसेस जो 2 वे होनी चाहिए। और जो चीजें हम नहीं देखना चाहते बेस्ट प्रैक्टिसेस वो है एक सेक्शन हैरासमेंट, utilization of resources, short-term projects. Lastly, I include one activity. Must be included. Any donor organization, and I am
launching any program, any project, he must be include those NGOs are working for vulnerability, especially person with different abilities, transgenders and minorities. Thank you. If the rest of the points can be gathered here with Mr. Zulfikar, so that would be great. We will save a bit of time. Think, what do you ask? I think we'll skip this. Let's move forward. इसको भी जाने देंगे, discussion होगी, इसको भी आगे करेंगे. I'm just going to try and, because of time, talk a little about transactional and transformative partnerships. I think this is going to be the key of the framework that we are setting. For us, transactional is where it's service delivery, subcontracted work, funding relationships, and transfer risk. And this is not the preferred model that we have. We would want to move more towards transformative partnerships, which means co-creating activities, mutual accountability, complex relationships, and shared risk. So that is going to form the basis of the framework that we have. इसमें नॉन फॉर्मलाइज्ड और फॉर्मलाइज्ड पार्टनरशिप्स हम दोनों एम कर रहे हैं. The non-formalized are more focused on knowledge exchange, dialogue, networking, and they do not necessarily include funds transfer. To formalize, of course, there are partnerships with community-based organizations, partnerships with civil society, civil society groups, partnership with NGOs, memorandum of understanding with partners, cooperation agreement with local authorities, because you can't do localization without engaging local authorities, and service contract with civil society service providers as well. These are again the type of partnerships. I just very quickly want to talk about the type of partnerships we are doing. पहले जो आ रहा है CBOs का आ रहा है. CBOs के साथ डायरेक्टली अभी तक अपनी स्ट्रैटेजी में, although they are our target group, उसके साथ we believe कि WHO should not directly be partnering. This is why we have local organizations, or they have to partner with CBOs to make things more effective. Partnership with civil society groups, I think this is going to be a key focus for us, and we would like to also see that with all the partner organizations that we have. I think that mutual learning and exchange is very important. The partnership with non-government organizations बात होगी. The last है strategic और advocacy partnerships, especially जिसमें अभी हमारे currently जो strategic partners हैं वो कम है. So and we are going to be looking at graduating more of our existing partners to strategic partners, and then taking on more partners who can then kind of be adopted by our strategic partners. We have a very good example with La Suna again on this, where they have taken the lead in one of the programs, nutrition programs that we are doing in KP. They are the lead technical partner. They are doing the capacity building of another organization they are partnering with. It is a very successful model for us so far, and we would like to see more of that happening and more application in that regard. थोड़ा सा कैपेसिटी शेयरिंग प्लान जो अभी तक हमारा डेवलप हुआ है, तो हम स्ट्रैटेजी में इसको किस तरह फ्रेमवर्क में किस तरह टारगेट कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं. बिकॉज ज़्यादातर जब आप हमारे पार्टनर्स के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिस्कशन होती है, सबका फोकस ज़्यादा फॉर्मल ट्रेनिंग पर होता है. एंड आइडियली फॉर्मल ट्रेनिंग्स आर द स्मॉलेस्ट पोर्शन जो कैपेसिटी शेयरिंग के ऊपर आप कर सकते हैं. तो हम उनको कैटेगराइज करंटली इस तरह से कर रहे हैं. 70% लर्निंग ऑन जॉब ट्रेनिंग है, 20% learning from others है जिसको peer-to-peer learning भी कहते हैं, और 10% formal training है. इसको currently जो हमारा capacity sharing plans partners के develop भी हैं existing, उनको हमने इन्हीं categories में group किया है. I just very quickly want to talk about आगे चलें जो structural changes as an organization हमें खुद भी करनी है. उससे पहले मैं वो थोड़ी सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. Then I'll quickly run through the expectations that we have from our partners. WHO ने जब काम स्टार्ट किया था तब हमारे पास एक बहुत बड़ी एक्सपैट्रिएट्स की टीम थी.
पहले वो काम कर रहे थे, उनके नीचे नेशनल पार्ट स्टाफ था, फिर वो पार्टनर्स के साथ काम कर रहे थे, तो बहुत एक्सपेंडेड था। पहले हमने अपने सारी पोजीशंस को फोकस किया था नेशनलाइज करने पे। उसके बाद करंटली हमारे फॉर द लास्ट 10 इयर्स प्रोविंशियल ऑफिस मौजूद रहे हैं इन पंजाब एंड सिंध। करंटली बलोचिस्तान भी हम सिंध से मैनेज कर रहे हैं, केपी इस्लामाबाद से मैनेज हो रहा था। As of 1st of April, we are going to be closing out on our provincial offices, and the reason for that is कि हमारे जो partners हैं, we want to divert more accountability, more ownership, more resources, and more decision-making authority towards them. तो हम जो बीच का tier है, और and since 15 years, if we are selling ourselves as a capacity development or sharing organization, then that beach का tier has to now become redundant. Eventually, inshallah, आपको country office की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, जो aim. So these are our expectations from our partners, which we are going to cover in the framework. Transparent and accountable. आप लोगों ने भी सबने more or less यही बात की. Participatory implementation of projects and program. Now, when I talk about participatory, I'm talking about the program participants, the CBOs, the communities, the local authorities, everybody, all the stakeholders on ground. Contribution to the development of strategies to improve living conditions, advocating the concerns of disaster-affected communities, play an active role in the civil society, joint learning with Welthanga Helpa and partners. I would just not again say, क्योंकि जो जहाँ की लर्निंग है, जितना जिस तरह हम कहते हैं कि एज एन INGO हम जो आपके लिए सबसे बेहतर काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम जो इंटरनेशनल लर्निंग है वो आप तक लेकर जाएं। आप हमारे लिए जहाँ पे हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं कि आप हमारे साथ शेयर करेंगे, तो ये लर्निंग्स के लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या चीज़ें सही काम कर सकती हैं और क्या नहीं, वो फिर हम वापस फीडबैक कर सकते हैं। और coordinate with Welthanga Helpa and all your partners on a regular basis. हमारी तो दो तीन और expectations हैं। एक local consortias की, we are really promoting कि organizations जो हैं वो consortias में आए, जैसे IHOs consortiums में आती हैं, local organizations consortia में आए। हम लोग as WHS अपने partners के साथ डिस्कशन में है कि वो लोग एक एक पार्टनर और दो पार्टनर्स एटलीस्ट और अडॉप्ट करें और वो उसके साथ प्रपोजल्स हमें सबमिट करें इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग इंडिविजुअल प्रपोजल्स. सो दैट इज समथिंग दैट वी आर आल्सो encouraging very strongly. And वो मैंने बात करी बस. I think so thank you so much everybody for your time and बात फिर शेयर करेंगे. Thank you. क्वेश्चन था मेरा, हमने पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क तो एक्सप्लेन कर लिया और सारी चीज़ें हो गई, इसमें आपने अगर थोड़ी हमें सपोर्ट कर देती कि प्रोसेस क्या है पार्टनरशिप का आपका, उस पर एक दो लाइन अगर हमें बता देती कि आपका प्रोसेस क्या है, आप पार्टनर नया किस तरह से सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें अगर मेरे ख्याल में हमें उस पर भी काफ़ी वो है, रिजर्वेशंस हैं या चीज़ें हैं, तो मेरे उस पर आप देख लें. Thank you. I think partners हम लोग साइकिल्स में सिलेक्ट करते हैं. लेट्स पुट इट दिस वे, पार्टनर्स हमें साइकिल्स में सिलेक्ट करते हैं. हमारा कॉल फॉर प्रपोजल एडवर्टाइज होता है एंड वी वांट टू, हम लोग उसके अंदर प्रपोजल्स ऑब्वियसली आते हैं पार्टनर्स की, जिसके अंदर हम सिर्फ प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड प्रपोजल्स नहीं होते. वी ट्राई टू डू दैट एवरी 4 to 5 years. नेक्स्ट साइकिल हमारा 2024 में आएगा. व्हाट वी लाइक टू डू इज कि एक पार्टनर के साथ जब पार्टनरशिप शुरू कर दें तो हम उनको ग्रेजुएट करते हैं, फिर हम उनके साथ अपने कमिटमेंट को और नहीं देते, उनका सिर्फ रोल में चेंज हम देखना चाहते हैं. तो करंटली 17 पार्टनर्स हैं. अभी सिर्फ जो कॉल फॉर प्रपोजल लॉन्च होगी वो बलूचिस्तान के लिए होगी इन द नेक्स्ट 2 weeks. हाँ जी. एंड फिर 2024 में एक लार्जर कॉल फॉर प्रपोजल दोबारा आएगी. व्हाट वी आर लुकिंग एट इज टेक्निकल कोलैबोरेशंस, और हर एक के साथ हम डिवाइड 200 ऑर्गेनाइजेशंस बैठी में. आई नो कि हम लोग अभी भी तमाम लोगों के साथ इकट्ठे काम अलग से काम नहीं कर रहे होंगे इंडिविजुअली, इसीलिए वी आर प्रमोटिंग कंसोर्शियम्स एंड कोलैबोरेशंस के आप लोग हमारे साथ जो हमारे एक्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ बात करके कंसोर्शियम्स में आए तो फिर हम पार्टनरशिप्स को एक्सपेंड कर सकें. थैंक यू. Thank you, Aisha. Thank you. और हम चाहेंगे कि
ये इनपुट्स आप जुल्फिकार साहब को भिजवा दें, ताकि जब ये डॉक्यूमेंट फाइनल हो जाए तो एक मरतबा हम आपको रिव्यू के लिए दोबारा से भिजवा देंगे। तो काइंडली फिर देख लीजिए इसको। इसके साथ में हमारी कोचेयर है मैडम आरफा, वो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आ जाए। कल की हमारे पास एक शील्ड रह गई है आसमा सलीम की। तो आसमा सलीम एक बार की रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ, कल आपने उनको सुना भी होगा। डिप्टी रीजनल रिप्रेजेंटेटिव है एशिया के लिए, तो उसको अपनी शील्ड इनायत कर। ये कैमरामैन कहाँ है, उसको भी कहें। With this, I'll request Chandrika from the delegation if she can come to the rostrum and can briefly introduce the delegate member to the larger forum so they can interact with and a brief purpose of the visit. So Chandrika, if you please join us. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to express my sincere gratitude to Pakistan Preparedness Partnership and NHN for the warm welcome and providing us the opportunity to participate in this important forum, the National Assembly of NHN. I would like to introduce the Sri Lankan delegates of the SLP Sri Lanka Preparedness Partnership delegates in Pakistan. I am Chandrika representing the Pakistan Indian civil society leader of the partnership. And we have here with us in our delegation Mr. Bandhu Vikramaharshi. He is the technical specialist of Asian Disaster Preparedness Center. And representing the disaster management center of Sri Lanka, we have Mr. Nishanta, Director of Finance, and Mr. Ajit Nishanta, Assistant Director, Disaster Management Center, and Wing Commander Jinendra Anasingha, Assistant Director, Disaster Management Center. And here also we have Ms. Manori Disanayaka. She's the Senior Assistant Secretary General of the Ceylon Chamber of Commerce. And we have here with us Ms. Yasangi Randeni. She's the General Manager of Edican Spacer PLC. And representing the civil society organization, we have Mr. Sasika Konamara. He is the technical advisor of the South Asia Partnership Sri Lanka. So it's a great opportunity to take a part in this important gathering, and it's a pleasure to see that all the civil society organization in Pakistan get together for a common goal. In Sri Lanka also, civil society organization plays a vital role in every phase of the disaster management cycle, and they do a kind of a huge contribution to support to disaster management center. So we also have recently established a civil society network in Sri Lanka as well, but our network in an infant stage at the moment. So it's glad to see that you also have initiated your network, I think, years back, and now in a kind of a very stable and strong situation. There are a lot more lessons to learn from you from NHN, and
it's very pleasing to see that you are working towards a partnership framework. And I think definitely the Sri Lanka Civil Society Action Network, with the support of Sri Lanka Preparedness Partnership, will work very closely with the NHN in the future. And we really want to learn from your experience. Yes, yeah. Thank you very much for the opportunity. We wish you all the very best in action, and yeah, we wish you all the very best. Thank you. Thank you. I'll request the CC member, our leadership council from NHN, if they can come to the stage and the delegates, so we can have a group photo with the delegates. If the delegates can join as well. Meanwhile, I do warmly welcome Sardar Tahir Iqbal Khan. He is the chairperson of the Kashmir Highway Authority. So if he can join us, Aisha, if you can join us as well on the. During the group picture, there is a small announcement for all of you. Please make sure कि आप लोगों ने आज और कल की attendance mark की है. अगर आपने registration अपनी नहीं की है तो please काशिफ हुसैन है पीछे, अलाबख्श है, नुशेर है, आप उनको approach करके अपनी attendance please जरूर mark कर लीजिएगा registration. दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि आप अपने CNICs की कॉपी काशिफ हुसैन को या अलाबख्श को प्लीज हैंड ओवर कर दें ड्यूरिंग द लंच टाइम. थैंक यू. रहीम, थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली मुझे तो इनवाइट किया गया इस महफिल में कुछ सीखने के लिए, जस्ट टू लर्न समथिंग फ्रॉम द पीपल हु वर्क्स इन द फील्ड एज अ सोशल एक्टिविस्ट. So I have no idea what I have to say, but I welcome all delegates from Sri Lanka came here, and all delegates from all around the Pakistan works in a social sector. I really appreciate your work. I welcome the Sri Lankan people. I just came here to learn something because I'm not a social activist. I'm a political activist and political worker. I work as a MD Kashmir Highways in Azad Jammu Kashmir, and actually the political work and social work is kind of same things, but little bit difference between these two works. And I appreciate the people who works as a volunteer in the rural areas in Pakistan, especially during this Salab situation in KPK, in Sindh, in Balochistan. I really appreciate all the people who works in this, and I appreciate the people who work as a volunteer. Actually, this is the key thing. As a volunteer, when you work with passion, that's a great thing, and I appreciate all of you. Thank you very much. Thank you, Sardar sir. Now I would like to request Ms. Chandrika to please come forward because I just came to know that you want to give some souvenir to NHN chair. Mr. Muhammad Ahmad, chairperson NHN, is also requested to please come forward. Convener is also requested to please come forward. Sajid sir, you can also join the picture. Then I'm alone and they are more. Ma'am, Aifa, please join us.
I would like to request Ms. Chandrika to please stay here. Mr. Kazi Altaf from Balochistan chapter, he wants to give a souvenir to Ms. Chandrika. Please come forward. Noor Bajir Saab and Hamidullah Kakar Saab, could you please join us? Ajad bhai. Why you left the stage, Bandola? Please stay here. It would be good, like if Wazir Saab can shed light on this cause. Ajrak, yes. This is So, taking benefit of this situation, let me tell you, for all my Sri Lankan colleagues, tonight we are... सीधी तो पहना हो मैं कॉपी सीधी करे जी ये ठीक है तो गलोची लग रहा है Thank you, everyone. I would like to share this news with our Sri Lankan colleagues that tonight at 8 p.m. we are going to have a musical night. So you all are invited. And please note that it is a traditional musical night. So we also want to listen some Sri Lankan music. Please join us over the lunch. Collaborate with each other during the emergencies. So we would like to start with Ocha. Good afternoon, everyone. Thank you so much for inviting me to this panel. It's a great privilege to be here. My name is Carlos Guerra. I'm the new head of OCHA office, head of office for OCHA, sorry. And I just arrived 3 months ago. I'm still discovering, learning, so I'm glad I have Shahid with me and Hamad, who have been my mentors since I arrived. And so obviously, OCHA, we closed the office back in 2020 when things were getting much better. Unfortunately, the flood of last year kind of pushed us to come back to support, especially it happens a lot in countries where the needs are beyond the capacity of the country. And what happened in Pakistan is definitely beyond any expectation in any country in the world. So the way how we work at the coordination, I'm sure you all know about it from since we've been here for, let us say, more than a decade, nearly 2 decades. We work a lot with our national partner and civil society. And NHN is our key partner. So we do have one strategic coordination forum called the HCT, the Military Country Team, to which both members, including an additional 4 national NGOs, are present. When it comes to localization, Pakistan is one of the, we say, model country where localization is very high on the agenda. A lot has been done over the past decade, but there's still more that can be done. And I think the discussion today is how we can take localization to the next step, next level, how national civil society can contribute further, not only to respond to humanitarian crisis, because, I mean, thank God there's not every time humanitarian crisis in the country. There's a development. We have the strategic development goals, sustainable development goals, SDGs, the number 17 is about partnership. And I believe this is where we can have a conversation about what we do, how national NGOs, civil society can contribute to the SDGs. Obviously, when we want to contribute to anything, we need funding. It's normal. Without funding, nothing can be done. NHN has been a champion in this area, an advocate for localization in the country. And we of OCHA, we used to have a modest fund, called pool fund, of 10 million. It varies from year to year, and 60% of it was going directly to national NGOs. The pool fund, we closed it again 2021. As we speak today, it's about to be completely closed. So we are no longer having that fund to support national NGOs. But our fund was so small, 10 million for a country like Pakistan is nothing, which is like a drop in the ocean. But there are a lot of
initiatives taking place by member states, by ambassadors, embassies, that are funding directly national societies. And that I think is a way that we will discuss with Ahmed going forward, how also the government can contribute to the development of national organization in the country, because they are the ears and the eyes in the field. They are the one who know the terrain, they are the one who can work, they're the one who know the issues. And that need to be complemented by additional support, additional capacity. And I have the two experts with me here today, so I'm looking forward to hear your views. Thank you so much. Thank you, Carlos. With this, I would like to request Shahid Kazmi to kindly please add on the question from PHF perspective. Thank you very much, Sana, and good afternoon, everyone. Although it's after lunchtime, so I feel a little bit there's less energy. Although Carlos has explained about the current humanitarian coordination architecture and in place structures and systems, Pakistan Humanitarian Forum (PHF) is the representative body of INGOs in Pakistan. So PHF mainly coordinate with multiple stakeholders, including Government of Pakistan at provincial, district, federal level. Mainly coordinate with other agencies, United Nations agencies through OCHA, by representing into different forums like as Carlos was mentioning the HCT, and then broader you can say a major area of PHF coordination and collaboration where we are practically working together is the NHN. Mainly our scope of work, you can say it's more about coordination. I'm happy to share that PHF, from its name, it looked like that Pakistan Humanitarian Forum, but we coordinate on development as well. It's not only the humanitarian coordination. Being a representative body of 42 INGOs, we actively coordinate with the counterparts, stakeholders from the government, from UN, and different stakeholders on development as well. Uh, you can say that in last year, in 2021, if I say the major contributions from INGOs in Pakistan in terms of annual contribution was around 60% development and then 40% humanitarian. But since this year again we have a lot of humanitarian crises due to floods, so it will be more humanitarian. PHF, if I quote few of the good example to just start this discussion. In COVID, this was a major challenge in terms of coordination when everyone has, or like the lifestyle and everything has been was changed. PHF and NHN has set a very good example of working together by establishing the coordination structures in 4 provinces. So, if I say whatever the any shape of coordination in the country is currently existing between the humanitarian actor, that is the coordination which was set by the PHF and NHN. And this was not only to fill the gaps, or you can say not only to fill in the coordination checklist, but practically in the COVID times through different working groups like FSL, health working groups, not only at the federal level but in provinces and district, they have set a very good examples of coordinating with the government, coordination among the NGOs by developing a number of guidelines and many more documentation things. Similarly, the coordination which we established in the COVID times, still we have the provincial coordination structures in all the provinces where in number of the provinces, one side if PHF is leading as a lead and then NHS is a co-leading. So we are also, we do have established working group which is called a core committee between the you can say the leadership of the PHF, which is called the PHF Executive Committee, and then CEC from the NHN, who have a set TOs, and mainly that is to the objective of that coordination and core committee is to strengthen the relationship between the international civil society and local civil society, and to protect and safeguard the issues of the common interest of both entities in the country. So I would say that there's a lot to be done. बहुत सारा काम है तो है. We still are finding the feeds when it comes to the localization. But I see, I will end from this point. I could say if there is a localization agenda being practically taken forward in the country, are being supported. So I can quote an example of WHH. Since many years I've seen WHH is investing, supporting, developing the national capacity in terms of localization. So this has been supported and strengthened by the INGOs. I think there are a lot of areas where we need to work on, and like these are the platforms that will be helpful to know and learn more about the future perspective. Thank you. Thank you, Shahid.
मैं अब अमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक नेटवर्क जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं 2010 में लोकलाइजेशन एजेंडा पर बना और 2014 से लेके 15 तक वो एजेंडा जिसको ग्लोबली एक्सेप्ट कर लिया गया, आप एनएचएन के पर्सपेक्टिव से कैसे इस को डिफाइन करेंगे? थैंक यू सर। ये सफर तो मेरे साथियों ने भी तय किया है और I'll a bit talk about our national different level of coordination at national level. So if I can talk about the national level, so as Carlos and Shahid mentioned, that we are part and parcel of the HCT. NHN has been given 2 seats in 2016 and 15, 14. So we have a good presence over there, though now we do feel that the seat must be increased because our outreach is increased and our members reach to 200 organizations now from across Pakistan. And this is sometimes difficult. So one of our demand in the future is that our provincial chair should be given representation in the HCT as well. So every region must be represented in the HCT. So at the HCT level, NHN and PHF is present, and all the viewing agencies are there, whereby it is the top, at the top of the hierarchy when we are talking of the coordination. And we are preparing agenda for HCT. It is the NHN chair, it is the PHF chair, it is like HC and MOCHA. We have a regular meeting before HCT. We set the agenda and when HCT is happening. So this is one of the best example in the world as well. That we opened up HCT to each and everyone. If they are if they are member of NHN and PHF, and if they are not member of the PHF and NHN, so the HCT is open to everyone, and we can take everyone online. But they can put their agenda or any reflection through the representative of NHN and PHF. This is a limitation because we have a limited time. Secondly, we have a close coordination with the NDV. A regular coordination at federal level with the NDV. And same is the case previously, we adopted a practice that before the meeting of setting the agenda for NCT, NHN and PHF chair used to meet regularly during the COED and after the COED. So it was a practice when Umair was there, but somehow we have lost that momentum. We need to restart that again. Then we felt when it comes to PHF and NHN that okay, chairs are meeting regularly, but our XCOM and CC, the leadership from both sides should have regular meeting. So we can expand this coordination. So now we have expanded that. There is a committee from of the CC, from NHN, and there are XCOM members. They are regularly discussing the issues among themselves as well. Top of the all, there is like policy and strategic forum where NHN, PHF, OCHA, RC, and in the image here, like they are meeting if there is any acute emergency or any crisis for the most important agenda. So we have lost that momentum somehow as well because it was once a year or twice a year it was a practice, but somehow this year we couldn't. One of my recommendations will be that we all, the stakeholder, must reactivate that forum for close coordination with the government. Then we have provincial level coordination. Before OCHA has shrinked,
so they didn't have any representation in provincial level. But in the post-flood scenario, now they have allocated provincial coordinator from MOCHA, and we have provincial chapters. So our provincial chairs and our provincial executive council, they are regularly meeting with the PDMs and the OCHA provincial coordinator, and now we have started this practice with PHF as well. So PHF, OCHA, NHN, along with the PDMs, they have regular meeting now at provincial level. So there is a need of improvement in that as well, because we have a volunteer structure. So we have now allocated dedicated staff, provincial coordinator as well. And in this last week, we have on board around about 18 people, more for this, specifically for this coordination. It will be a support to the provinces, so we will have two provincial coordinators at each provincial level, and the same is the case. Our coordination will be further strengthened with our stakeholders, because we will be having human resource now at the national level as well. Now coming to the district level, because NHN strength is at the district level, our member organization are very much present at every district, at each district level in Pakistan, in every region of Pakistan. So this time, when the flood happened, so I requested to OCHA that if you can localize this coordination mechanism, and this has been our advocacy point since long, that OCHA should work on these lines to train the local networks so that we can localize the coordination mechanism. It will be a sustainable model, and we can be engaged with their Bangkok office or their regional offices. So we'll be a helping hand if there be any emergency happen, so they can reinforce us. But somehow, as the union structure is so big, and there is bureaucracy involved, and we were talking of the co-creation and like the innovation, so somehow the receptivity was low, and the same thing happened. They shrink their office, uh, they relieve their experts, and then flood happened, and they have to rehire. So now we are trying to mainstream. Now at district level, we have sent our list to OCHA and to the rest of the stakeholders to nominate, to notify the NHN organization at district level for coordination with the district authorities. That is the weakest link of all the humanitarian coordination in Pakistan. We are so much good if you compare any country at national level. There is a close coordination. We are regularly talking to each other on WhatsApp. If it is like PH, if it is NHN, if it is OCHA, if it is RC. At provincial level, I'll say so. But at district level, neither we have DDMAs, nor we have OCHA representation, and it is not possible for them as well, because it will be very costly model. Nor it is possible for the PHF to allocate people to the district level. So NHN is best placed for the district level coordination. And this is our continuous request that okay, at national level you can take lead and we will support. But at national and provincial level, we as NHN can take lead and you can support. So that's how we can build a sustainable coordination mechanism across across all the layers and across the country. Uh, so now we are moving towards that. Now at provincial level,
we are collaborating with the PHF, we have OCHA coordinator, so it is improving day by day, and we have a regular coordination. After this flood, it was decided that it will be a government-led response. So the PDMAs are taking lead. There are some lacunas, we need to improve that, but like at least we have structure and our professionals are working and system is running good. One of our key asks is the flood hit Pakistan. The first email I wrote to OCHA head over here and then to their regional office to please reactivate the Pakistan humanitarian pool. And still we are on that point, and yesterday this was in my presentation. It was not 60%, it was 73% going to the local organization. But apart from that, it is not a matter of going to whom. It is a matter of having a ready available funding. Because this is our learning, we need to improve our coordination with the donor. That the pledges were made, the commitments were there, but it took months and months and months to translate those pledges and commitments and to transfer the fund to Pakistan. So Pakistan Humanitarian Pool Fund, every year we were having like about $10 million dollar per annum. So sometime we used it, sometime we couldn't if there is no emergency. So the thing, advocacy point for all of us is to convince donor to have a pool fund, readily available fund for any sort of emergency. And the donor can replenish every year. It is not necessary to spend it if it is not needed. But like they can replenish because time is crucial in emergencies. If we are going with the funding and with the packages after 3 months or 4 months or 5 months in the flood affected areas, in the earthquake areas, everything has changed. It is no more emergency. They are in the early recovery phase. Sorry, Sanan, no, I am winding it up. So this is our advocacy point, and as Carlos has just joined, so we had few meetings, but we couldn't. We will be meeting in detail, and we will set our advocacy point. So this is one. Our coordination with the donors at NHN level is weak. PHF has strong linkages with the donor, OCHA and UN has strong linkages with the donor. I'll request them to support us in that coordination as well. Because we are always feeling left over. They are meeting with the donor directly if UN is raising fund, so they are meeting with the donor. If INGO, PHF is raising funds, so they are meeting with the donor. Then they are not inviting us, by the way. If they are inviting us, so that is for some issues. We need to be one set. We need not to compete with each other. The UN agencies must not compete with the INGOs who are here. And the INGOs must not occupy the space of the local actors who are here. We need to set rule of the games over here. If OCHA is getting 1% of the humanitarian response fund for coordination, in the last 12 years, they couldn't extend a single dollar to NHN. In this flood, I'm proudly saying that it was the NHN organization. We allocated more than 50 vehicles. We allocated hundreds of our professionals to conduct the need assessment, and it was all voluntary.
and they were from those affected communities. And no UN agencies were ready to allocate any single person for coordination. But on the basis of that assessment, when the fund is coming, so then we are out of debt. We need to be heard. We need to be accommodated. Otherwise, tomorrow we will say, okay, we are not doing it. We are doing it for our people. We have done it for our people. We are under compulsion. We have to do it. This is in our blood. But the other agencies, they should take care of the local actors. It is not a tissue paper to use them when they need it, and then throw it. It is very much discouraging. As an NHN chair, I have faced tremendous pressure from all the Pakistan. I have one person secretariat, and I have 200 organizations. And they were all affected. If they were from Sindh, so they were underwater themselves. If they were from Balochistan, so they were underwater. And I was calling, okay, please do this assessment, please do this meeting for OCHA, please have a meeting with PJ, while giving them no resource. Same is the case with the PJ. They have resources. They can afford professional. We are all doing this work voluntarily. So they should take care of the local organization. They are their partners. If they will support, we are doing it anyways. We are doing it for our people. Because we can't see them die. And they have expectation. Because we are living among them. We are the most accountable. We are the most coordinated. We are the most accountable entity in this whole sector, because we are living in the district. We are living in those communities. So they know Ahmad was whom. And now, who is he? Who was his father? Who was his grandfather? What is the family? So they can make us accountable, and we need to live among them after. So, just to summarize, we need to sit on this. We need a fair share. We expect support. Now we are requesting other stakeholders or alliances to support. Now we have brought some resources as well. So we are offering those resources are professional to have a joint training of all the coordinators. If it is from OCHA, if it is from PHF, if it is from NHN, not only at national level but at provincial level, so we can further strengthen their coordination, and we can get 5W matrix, we can get data from the field, and we can set our advocacy points on the basis of ground realities. Because still, my colleagues, they have shared with me that a lot of districts, they were not included in the response. They were not in, like 33 million people were affected. And our first plan was for 5 million, and our second plan was for like 9 million people. So what, and we have, among I think 82 districts, we have just like 32 districts. So what if there are most affected villages in the less affected district? No one is taking care of them. They are out of the domain of all this response appeal money. So, but if our organization are present there, so they are not now not having any funding window, but there is a continuous demand
from the community to support for the support. So we in future at federal level we will set advocacy agenda how we can take care of the leftover people, how we can strengthen the coordination mechanism with PHF, with NHN, with Sansi Say, with Ready Pakistan. With this, thank you so much. थैंक यू सर। आज के सेशन की एक हाईलाइट ये भी रहेगी क्योंकि हम ये भी सुनने को मिल रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस इशू इस टॉपिक को डिस्कस करें। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जब पैनलिस्ट की से हम सेशन कवर कर लेंगे, आप सब भी प्लीज़ अपने क्वेश्चंस रेडी रखें और आप सबको भी ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाएगा ताकि आज आप भी अपने अपने ख्यालात, अपने सवालात हम सबके साथ शेयर कर सकें। इसके साथ ही मैं आयशा से रिक्वेस्ट करूंगी, आप जिस फोरम को रिप्रेजेंट करिए एक बहुत ही यूनिक फोरम है जहाँ पे नेशनल्स और इंटरनेशनल्स इकट्ठे बैठ रहे हैं और इकट्ठे काम कर रहे हैं। सो हम जानना चाहेंगे कि रेडी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन एंड व्हाट मैकेनिज्म रेडी पाकिस्तान इज फॉलोइंग। Thank you so much. I think just to clarify initially के जो role determined हुआ है for Ready Pakistan. We are a network which has members from INGOs as you said, and we have networks. We have members who are national organizations, and most of them are members of the National Humanitarian Network at present. Initially, when Ready Pakistan started its operations in Pakistan, we had a very detailed meeting with PHF and NHN, and we decided what is going to be the role of the network in terms of coordination, because we know that we are specifically we are the doers, right? So the coordination work we have specifically left for PHF and NHN, and the members, because both the members, the INGOs and the NGOs, half of them represent PHF, the other half represent NHN. So we felt we are not going to duplicate that. But what we have been doing is focusing on a lot of planning and preparedness, which then automatically filters into all the coordination work that is being done. And I think this work we've been doing very effectively, not just when the floods hit. We were doing it before that because we are focusing extensively on anticipation and early action. And doing that where we have been doing a lot of contingency planning. So the way that we have worked is we have gone bottom up. We haven't gone top down. So we have contingency plans from the districts, which include the civil society members, it includes academia, it includes the government representatives, it includes some of the private sector organizations who are also willing to contribute to the cause. So the contingency plans were developed at the district level, hazard-based, pulled together at the provincial level, and then consolidated and shared at the national level. We did this for the heat wave, and I think Pakistan was reported across the globe as having one of the best heat wave responses last year. And I think that was exceptionally due to the members that we had in Ready Pakistan. Then when it came to floods, the first information that went out on how many people were affected, what kind of damages had been caused, went from the contingency plan that was developed by Ready Pakistan. We shared that with OCHA, and the first 5 reports that went out were only based on the information that came from Ready Pakistan. So I think it just shows how collaborating and sharing information can help kickstart processes that need to be done. I think that was one of the key highlights that were there. Generally, when we talk about localization, I think I would want to talk more about localization than coordination, and I think after what Amar said, there's not much left to say. In terms of localization, I think there have been some very exceptional benchmarks that the network is setting. First, I think the response time, because we were one of the first, our member organizations were one of the first to respond to the floods last year. We had people responding to the floods in Balochistan within 72 hours after the flood hit, and we had because we had pre-position funding available. I think that was one of the key successes that was there.
Then when it comes to responding further on in terms of not only preparedness, I have people sleeping, I'm really boring people. So it's not just about how much of the funds that we had available, it was also about how ready the organizations were to respond. I think everybody who submitted a contingency plan started their response within 24 hours after their funding was released. I think that again is a very, very good example of how you can make use of pre-positioned fund, especially in a crisis-lit country like Pakistan is. Then the other success I would like to quote here for Ready Pakistan is a kind of coordination and collaboration we have from the district to the national level. So we have the district local actors sitting with us when we are doing the planning because we have this technical working group structure. We work on hazards. We have a technical working group for heat waves. We have a technical working group for drought. We have a technical working group for flood. So we start from the district level. We have people from the district sitting there. We have the provincial representatives sitting there. And when we talk about provincial representatives, we're not just talking PDMAs. We're talking about all the other line departments who need to be engaged. The National Disaster Management Authority is part of the National Steering Committee for Ready Pakistan. So we have people included there at the topmost level to make sure that everything runs in a flow. And I think that connectedness, having everything working in the manner that it needs to work, has been very, very effective for us. I just want to talk about some of the coordination gaps that Ahmad highlighted earlier. And I think this is something because we were members from our network were there, they were delivering, we were getting a lot of information on what the actual needs on ground are, and did they actually get reflected in the first appeal? Are they reflected in the 4RF framework that we have? And I would very bluntly say no, because there was no consultative process. Coordination is just not a one-way stream on where you are sharing information on what is being done. I think all the gaps that were there that needed to be highlighted, that needed to be included, that needed to be prioritized were left because some people decided it was easier to sit in a room, fly people in from other countries, write your appeal processes for you, and send people back. That does not reflect inclusivity. I think we absolutely lost as a nation what we excelled in when we were responding to the 2010 floods, especially in terms of coordination, especially in terms of how transparent the processes were, especially in terms of how transparently the funding was flowing, how transparently the aid was going out. All of that we have lost and are still losing in the current response, which we really need to focus on. Thank you. Thank you so much, Aisha. So Ms. Alia is representing Sun CSA. So how you would like to explain the network's efforts in terms of coordination and collaboration, specifically in localized gender? Thank you so much. Scaling up Nutrition Civil Society Alliance is a bit different from all the alliances sitting here, but we are one of them because our members are represented, are members of READY, they are members of NHN and also PHP. So, the Scaling Up Nutrition Civil Society Alliance is part of a global movement, Sun movement, as most of you will know. This Sun movement in Pakistan is hosted by the government of Pakistan in the planning PND, Planning Ministry, Planning Commission, and it has different networks through which it operates. And Scaling Up Nutrition Civil Society Alliance is the civil society voice of the Sun movement. We have, as of now, 234 members across Pakistan, and our governance structure is an executive committee that is elected by all the members, and we have representation from all the provinces and regions in our executive committee. So, because we are not, Sun CSA is not specifically humanitarian network, but you know that organization that work on the ground at the district level, at the group level, we have national organizations, we have CBOs as our members, we have international organizations who are member of Sun CSA.
So the organizations that are working out there, they don't differentiate necessarily that it is humanitarian work they are doing or it is the development work that they are doing. They actually respond to the needs of the community in which they are working. And this, I think, is what is the spirit of localization. And this is how it should be done. Uh, when Reddy was in the process of evolution, we have had quite extensive consultations with them. And I mean, it is the what Aisha has just told is because the Reddy was evolved based on the learnings of the networks and the gaps that were very visible there, like Ahmad Sab just very passionately pointed out the gaps that exist for the response. Ready is a unique network in the sense that it has foreseen that and included that availability of resources for response beforehand. So, Sun CSA, we our members are members of all these networks, and during the emergency, be it COVID or be it the floods now, the response that has gone, that has been done in the communities is because of those organizations who are there, and uh, they they have communicated with at every forum where they can, and they have tried that their voice should be heard. Um, our need, objective of Sun CSA is basically to make these response nutrition sensitive, because all the calamities and disasters that happen, especially the ones we are facing, like COVID earlier and now especially floods, malnutrition in Pakistan was a very major challenge even before all that. Like in 2018, it was a challenge. Like 40% of your population is under five population was stunted by that time. And you can imagine like 37% households were food insecure. And now you can see when almost one third of your country has gone underwater and we are facing severe food insecurity. What impact will it have on malnutrition? It's going to be exponential. And unless we respond in a nutritionally sensitive manner, because nutrition alone is nothing. I mean, if we don't make our responses nutrition sensitive, be it wash, be it food security, because if you are giving rations based on the caloric needs and you don't include the basic nutritional needs into that, it's not going to help, because it will make people survive, but it will not make them optimally productive so that they can respond in that manner. So that is where we are working, and we are in close coordination, and our members are like working hand in hand with all these. And as Ahmad Sab said, that going forward, we are planning, because we recently had our elections at Sun CSA, and our new executive committee has just come in, sworn in, and members of our representatives are sitting here as well. So they are members of NHN, PHN, and Ready as well, and we will be going forward. We will be planning in close consultation with them so as not to duplicate, but to complement. Thank you. Thank you so much, Arya. There are two grand bargain commitments which are very commonly observed and followed. Support and complement national coordination mechanisms and include national and local organizations or responders into the international coordination mechanism. So I would like to request Carlos to, because since you're new here in Pakistan, so we want to know your perspective from the OCHA side, how OCHA is looking into transformation of coordination mechanisms to locals by shared leadership. This is the point which we have been highlighting from since years, but it would be good to know your perspective from OCHA side on the subject. Personal perspective.
Ahmad, thank you so much for the invitation. As you know, there will be so much opinion on OCHA. I think let me put things in perspective. It's not, OCHA is an organization, it's not the smallest UN agency. And we only do coordination. We do advocacy, we don't have money that we give to people. We only have a full fund when the donors make commitment, we're gonna give you 2, 5, 10, 20 million. I really encourage you to take the lead on it and then to continue on the organization efforts. Because as you said, OCHA come and goes. OCHA is a merged organization. Many things are not perfect, and things will continue to be perfect. I mean, you mentioned the number of nutrition cases. You know, in Pakistan, for many of us who live abroad, for us it's a middle income country. So therefore, it's a country that can sustain itself. When I first came here a few months ago, and I've been told there are over like 5 million people who are in food insecurity, IPC level 4, soon to become IPC level 5, which is the highest level. When I've been told there are over like 4 million children who never seen school, I was shocked. I was shocked in Pakistan to hear that, a country in which there are railways, roads, electricity, internet across the whole country. And that did not start only 1 month ago or 6 months ago on the flood. This has been ongoing for decades. So we want to be the advocate for the poor people and for the people who are most in need. We don't need the UN. You have the voice and you have the organization, and we have to work closely with the government. We OCHA, we can only support. We work very closely. Well, at the moment, I'm still very new, but my predecessor have been working. Things are imperfect. What we try to do at the field level is at the district level, it was difficult to have coordination at each district level. Our RCNC, Julian Arnex, was pushing, we have to work with the government at the district level. Obviously, you mentioned the 34 districts that we mentioned, we prioritize, but there are more than that, there are over 50 districts affected by the floods. It's impossible to put 50 staff in those districts. We worked a lot with the BDMAs, but we also work in some of the districts. Now, in those ones, we ask the BDMA to do coordination meeting and invite everyone. Some people, when we do that, complain this meeting is not constructive because there are like 50 people in the room. When we try to reduce from 50 to 20 to make it more constructive, some people will complain we were not invited. So it's difficult to please everyone. In my opinion, coordination is a consultative, it's a two-way discussion. It is really, believe me, it is really hard for any of us to say, okay, coordination is working very well and we are going to assist all the people. It will never happen. What we can continue is good in Pakistan that we have the NHN and we have the NHN. It's a two network who are communicating with their partner and they're bringing the message to the HCT. But the HCT again is only a coordination forum with the international actor focusing only on humanitarian issues. The key solution to Pakistan is not humanitarian. The key solution to Pakistan is development, is working together with the government, is linking to the 4IF. 10 billion, 11 billion, 12 billion pledge at the Geneva conference. I don't know how much of that will come to fruition in Pakistan. I hope all of it, even more. But this is where we have to put our energy to go and speak with the government, with the authority every week, every day. Listen, this district, Hyderabad, Islamabad, whatever it is, there are needs in nutrition. This one doesn't need in health. This one kids are not going to school. Whatever it is. And then push the authority to fund those activities in this one. Humanitarian is not a solution to anything. Humanitarian is only to a tip on the iceberg of the issues. I apologize if there is more request on OCHA. We are all listening here, but also we are very small. In fact, we are smaller than you because we are only one voice, but we do reach out. If you would like to have more coordination with the donors, easy to do. We can do it. And if NHN did not get any funding during the response on coordination, which is very, very much needed, important, I can understand maybe that might happen because a lot like me
because many people, many organizations, many UN agencies came to Pakistan to do development activity after 2010. And many people were just focusing on development. So when the emergency comes, obviously those new UN agencies, new UN reps, don't necessarily know the history. And that's where things fall through the cracks. Because lack of knowledge. But with Julian, I believe he has tried very hard to push that. But there's more we can do. In my time in Pakistan, I promise you I'll do my best to fill some of the gaps. I can't promise solution to every question, but we are dedicated. There's a goodwill. So where there is a will, there is a way. Thank you, Carlos. Like, we are not asking for funding, but this is like an not. We are coordination is a specialized field, and OCHA has been specialized in it. So if there is an indigenous network, so at least they can train them. At least they can capacitate them, and at least they can coordinate them with the donor, with the relevant stakeholders. This is what we are expecting from OCHA. Because if we are receiving a call 10 times a week, and we are responding to OCHA, and our 200 members are needed to put their data on 5W matrix. So sometimes it is very, though internet is available, but sometimes it is very like it is very difficult for all of us to make them understand how to project their work, by the way, and how to coordinate with their authority. And for that matter, they missed out. They are doing a lot, but they missed out. Like PHF right now, Shahid can say that last year how much funding and how much people we have catered. They have this figure. UN has this figure. NHN don't. Because we don't have that technology. We don't have that training to assemble that data and project our work. And to assemble our, like, to show our volunteer work even. So in some of the areas, we are expecting technical support. In some of the areas, we are expecting training. In some of the areas, we are expecting linkages. And in some of the areas, we are expecting OCHA to educate for us, even with our government. There is a mentality that if a local organization will go to the DC office or to the PDMA office, the impact will be different. But if their point will come through OCHA, the impact is quite different. So we want you on our side. And if like the OCHA, the RC will suggest us that okay, this is a government-led response, and now you have to get in touch with the government, and now you have to get in touch with the donor. So okay, after some time we will say okay, bye HCT, bye HC. We can, if we can do this, what for you are here then? So then I'll become HC, by the way. And that was my question actually. We will have our own HC. Shared leadership. We will have our own HC. And we will have our own coordination with the donor. And then we will project our work, that how much cost effective we are. So what I mean to say, there are a lot of things that can be done. The problem we are facing with OCHA, coordinating with OCHA in the post-flood scenario. I requested, my first request to the Carlos was to stay for a while. Because every month after flood, we met different head. This was the case
Like every month there was a frequent turnover. So how you can establish relationship if you are coming for a while for a month or 40 days and then go back and then so I requested Carlos, please Carlos, the most important thing you need to do is to stay for a while in Pakistan. Sustainability is the one element. So that we can understand each other, by the way. It's like uh, not a matter of a day. Thank you, all of you. Actually, because luckily I have been part of NHN, and from NHN platform I have been coordinating with OCHA and PHF and even Sun CSA. And so the thing which I have been noticed, and it has been discussed by Ahmad Sahab as well, that there was a lot of good practices. There were a lot of things which we were doing in the past, but now we are not following it. So it would be good to follow those paths and learn from them rather than creating the new ways. Because whatever was, and it is not the case, Carlos, because you're new. I know that previously there was a very effective coordination with the OCHA. And I'm very surprised to know from Ahmad Saab and Shahid that there is a gap of coordination between OCHA, NHN, and PHF. So I think so we expect a lot from you this time. This is a very small area, ladies and gentlemen, because the theme which we are following for National Assembly is adapting humanitarian action to the effects of climate change. And I tell you what, that there is a lot of coordination, collaboration, and communication in the humanitarian sector. But when you are going to talk about the climate change, and when you are going to talk about the development sector, a huge gap is there. So your strength is the base to coordinate and collaborate with the climate change or the development partners. We need to learn from that. With this, I would like all my fellow colleagues sitting in the hall to kindly please raise your hands for the question answers. And I would like to request my colleagues from NHN to please facilitate. So starting, okay. Please do introduce yourself while asking any question. Right. Hi. My name is Shahid, and I always, I don't know. But I think, yeah. My question is very simple. To Shahid Saab, we local partners, we consider that we are I don't know, yeah. We local partners, we consider that we are very much owned by NHN, and we know why, because we are the members. And we have seen, like uh, Aisha mentioned, Aisha mentioned before that we also were part, the local partners were part of the some delegated meetings like with DT Eco and then the German government. And my point is here that UN and the INGOs, they have the, when it comes to the power structure, they are sitting above everyone. As Ahmad Saab said, even if I go to DC, being an executive director of a local NGO, and even if someone goes from UN, there is quite a difference. So it's more about the power. And but while saying this, I would say the local partners, like 190 local partners, still we are talking about localization. We know it is being realized, but to operationalize it, still we see that there are so many practices in the partnerships, in the capacity development, and there is huge inequality or like equity issues to the local partners. Even I remember Ahmad Saab was presenting duty of care in one of the HCT meeting, and he was not given the proper time in UN meeting. Ahmad Saab, correct me if I'm wrong, because I was there in the meeting, and I also hear Carlos many times in the HCT meetings also. So when it comes to the rights of the local organizations, their staff, their organizations, the equity issues, how you are seeing this imbalance, the power imbalance within your organizations and the local organizations, and what your leadership can do to minimize it, if not eradicate it. Thank you. Over.
अस्सलाम वालेकुम जी, राबिया गनी मेरा नाम है। पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक है। माजरत में अंग्रेजी में बात नहीं करूंगी, आप ट्रांसलेट करके बता दीजिएगा। मेरा कंसर्न ये है कि जी जो यूएन एजेंसीज हमारे साथ लिएज़ॉन करती हैं, उसमें ह्यूज गैप इस तरह भी है कि जो ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं या सेमिनार्स होते हैं या कोई भी हमारे वर्किंग ग्रुप्स जो बने हो, लाइक आई एम मेंबर ऑफ पीएससी ऑल्सो, तो उसमें ये होता है कि हमें एनएचएन के पार्टनर्स को, मेंबर्स को एज ए साइलेंट ऑब्जर्वर रखा जाता है। तो हम कैसे इंश्योर करें कि हमारी बात सुनी जाएगी और जो हम रिकमेंडेशंस देना चाहते हैं उस फोरम पे वो आगे कैसे पहुंचाई जाएंगी। तो मेरी यही है। अभी जैसे एक छोटी सी मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। अभी 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म हुआ है जी, लेकिन वहाँ पे फ्लड एरियाज में ये था कि खवातीन पे लाठी चार्ज हो रहा था क्योंकि वो वहाँ पे रिलीफ कैंप्स के ऊपर अपना सामान लेने गई हुई थी। तो आई डोंट नो कि हम लोग इसको कैसे हाईलाइट करें, कहाँ हाईलाइट करें, या फिर ये सिर्फ इस्लामाबाद तक रहेगा या नीचे तक जाएगा। थैंक यू। Thank you, Rabia. One question from that side, please. Anyone who wants to ask any question from that side? वो पीछे चले जाए आप। Thank you. It's good all the networks being present, sharing about their strengths, their problems. I from Balochistan have this question. When we all have discussed from the last yesterday and today, we have discussed that there are a lot for the social sector, particularly all the NGOs, the networks. There are a lot of problems from the government side. I'm asking all the networks, particularly OCHA, that who is going to bell the ring? Who is going to वो हमारे उर्दू में कहते हैं ना कि बिल्ली के घंटे में बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? Who is going to lead कि पाकिस्तान में तमाम में के लिए all the NGOs have जो जो उनकी बिजनेस जो उनको इस वक्त मुश्किलात पेश आ रही हैं उसको किस तरीके से आप ईज करेंगे? How will you ease the businesses for the NGOs from the national level to the local? All आप लोगों की अपनी coordination. What would be your coordination among all the networks? What is your strategy? How much time will you take, and who will lead to ease the business for all the networks and NGOs at national and local level? One. Second thing, representing Balochistan, do you know that 32 districts were affected in the last floods? What was the ratio of the funding you issued to Balochistan? Only 5 districts were assisted. Assessments were conducted by the NHN with the help of OCHA. What was the ratio of the funding? As you know that 9 million people were affected in Balochistan, but the funding ratio was very low. What is your strategy for the next? जो भी हमारे पास, maybe it can be flood, it can be earthquake, it can be anything, और climate change के हवाले से, how are you going to see to increase the ratio of the funding for Balochistan? These two questions. Okay, thank you. And starting from Ocha again. Yes, definitely. Okay. On the first question was that there is equal share of time in the city. Well, that's easy enough. But first, before we go to the institution, at least number one, globally speaking, it was decided by the Inter-Islamic Committee that we have 9 clusters. In Pakistan, we did not activate the cluster. One of the clusters could be food security, one is nutrition, one is health. In Pakistan, for this flood, in 2010, we activated the cluster. But in Pakistan this year, or last year exactly, we did not activate cluster system, where we said we will have sector. But we will use the same approach than the cluster system we were speaking. Because it's globally endorsed, we have UN agencies, UNICEF, who are the sector slash cluster coordinator, the provider of the last resort. When there is no one left, usually UNICEF is the one accountable to that. Now, the reason why it is UNICEF and not, I don't know, use any example, any NGO, it's not us who decided it. It's been decided by the same thing you have
when it comes to the Federation, International Red Cross movement, they also take the lead when it comes to shelter. And if it's a natural disaster, Federation will take the lead on something. If it's a conflict, it will be the UN. That is globally speaking. Like for health, health is WHO. Now in Pakistan, when we have the HCT meeting, we always try, and we can do better, at least on my side I can do better, to reach out to our two colleagues sitting next to me, what will be the agenda. And we always welcome to have an NGO or INGO presenting some of the challenges that they are seeing in some location. We really, in fact, I would love if I have every time there's an HCT meeting, someone presenting on something, a topic that is very important, and they're requesting the HCT for decision making. Often it's asked to me, what will be the agenda for the next HCT? And I'm like, okay, let me go and check with my colleagues. And we make up the agenda. But if NHN and PHF can come to me and tell me, Carlos, we would like to make a small presentation about Balochistan because we are seeing so many issues on access, on registration, on lack of funding, and we have some facts that we would like to bring to attention to SCT because we see people are dying or people are getting more in dire situation. We will never say no. In fact, we welcome this intelligence, we welcome this information. I don't have the answer to everything. My colleagues don't have the answer to everything. We rely on you. And that is where you get your voice to be heard. I don't think at the NCT, and you can tell, we never say no to something. We might say no if the presentation is about, I don't know, UNICEF presenting how much nutrition kits are distributed. We don't care about that. There are the intersector federation group, there's the 5W, and there's people doing analysis. What I'm interested on is to understand what are the gaps because we are not doing that, and what action do you need to be endorsed by the country team. That is what I need. Something as strategic as we can. Question on funding in Pakistan. I don't have the funding figures between Balochistan and Sindh and Peshawar and Punjab, but what I can tell you, from the 800 million requested, we have approximately only 300 million. And 300 million is a big figure. Exactly, it's 262. Now, my colleague is collecting from the agency how much funding is available, but our flood response plan has been funded 32% only, which is really nothing. So I'm sure Balochistan did not get as much assistance as Sindh, not because it's Balochistan, it's simply because there are political and security risks in some areas in Balochistan that we as international organization, we cannot go. Not only me, but even the INGOs cannot go to. And when the UN cannot go to a location because of security risk, believe it or not, we tend not also to put that responsibility to a national NGO to put them at risk. We will not go and say, oh, you know, we're going to give you $100,000 and please go and do assistance there. If a national NGO come and say, okay, my situation, my security in that village is guaranteed, there is no risk, then we will support them. But we will not divert our responsibility to someone else. And that I can tell you for a fact. That's why in Balochistan you see less aid in Balochistan than in Sindh. It's purely for security and political reasons of the current context. So we as OCHA, we have an office obviously in Quetta, but also the south of Balochistan where we can access from soccer. We stepped up our activity. And right now, we moved some of our international position from Karachi all the way to Quetta in the south of Balochistan as well to be able to better understand what are the gaps and what are the needs. But seriously, and again, I mean it, if NGOs, INGOs, you feel strongly about a location that is desperately in need, and if we don't do something, something will happen bad to these people, you have your two key advocates, and you have me as well, just an email, and we'll bring it to SCT attention. I think no one will ever say no to that. Never. Thank you. Thank you. Shah, we would not like to go you so easily, so please, over to you now. Okay, I think on the operational sides and how things goes, Carlos has mentioned, explained very well. मेरा एक अपना पर्सनल ख्याल है, it's not a
आर्गूमेंट, बट मेरा ख्याल ये है कि एक गैप है जो दूर करना बहुत ज़रूरी है। वो सोचने का मसला है, और सोचने का मसला ये है कि मुझे अपनी मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये उनके अंदर एक थोड़ा सा गैप आ गया है बाकी एक्टर्स को लेके। जो नेशनल एनजीओ के नुमाइंदे होते हैं वो सोचते हैं कि इंटरनेशनल जो है वो डिफरेंटली कर रहे हैं, या यूएन डिफरेंटली कर रहा है, या वो जानबूझ के नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है बिल्कुल। आई कैन टेल यू, लाइक आयशा is part of the executive committee of the PHF, and honestly, I gives you a very clear and transparent feedback that whenever we are sitting in the PHF strategic meetings, we always encourage this point that we have to strengthen NHN, we have to work closely with the national NGOs. लेकिन एक चीज़ जो शायद मेरी रिक्वेस्ट है, स्पेसिफिकली being a son of the soil, national NGO से, चूँकि I don't see on you all civil society being like a civil society or a courtesy forum, the floods or the disasters or emergencies, but this is civil society of Pakistan. And being a citizen of this country, I see if there is no strengthened or well-functional civil society, structured civil society in the country available, nobody can challenge anything. You cannot ask for the compliance. आप accountability नहीं कर सकते आप कि बहुत सारे मसले हैं ऐसे कौन हमारे, तो हम उनको शायद सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ये नेटवर्क बड़ा हो, ये सब ले। एक पे आपको आई कैन प्राउडली टेल यू, I have seen Hamad on many fronts, not only in Pakistan but at international level, being representing very intellectually और बहुत उस एविडेंसेस के साथ पाकिस्तान की इस नेटवर्क को और यहाँ के लोगों के इश्यूज को, मसाइल को। तो शायद एक NHN से स्पेशली मेरी गुजारिश है, NHN की लीडरशिप से भी और मेंबर ऑर्गेनाइजेशन से, कि यू नीड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। यू आर द ड्राइविंग फैक्टर, आपने ड्राइव करना है। यू हैव टू टेल अस that how we are going to support you. You have to tell PHF and international news community that how they are going to support you. तो ड्राइविंग सीट के ऊपर और लीडरशिप रोल के ऊपर आपको आना, और आपको थोड़ा मजीद ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि जितना आप ऑर्गेनाइज होकर आगे आएंगे, ये चीज़ें मजीद बेहतर काम कर सकती हैं। यू हैव द स्ट्रेंथ एंड फोर्स एंड एवरीथिंग। Okay, now the ladies' time. Over to you, Aisha. मैं थोड़ी सी ना कैंडिड बातें करना चाह रही हूँ आप लोगों से, सब कुछ सुनने के बाद। I'm sorry, I'm going to speak in Urdu so that most of the people can understand what I'm trying to say. हम लोगों का ना जी, हम लोग सुबह भी बात कर रहे थे, कल भी बात हुई, अक्सर बात होती रहती है सेल्फ हेल्प की। हम सारे सेल्फ हेल्प पे चैंपियंस बन के बाहर भी निकल जाते हैं, इधर उधर बातें भी कर लेते हैं, और हम इंक्लूसिविटी पे भी बहुत बातें करते हैं। हम लोग आपस में पार्टनरशिप्स पे भी बहुत बातें करते हैं, कोलैबोरेशन पे बहुत बातें करते हैं, लेकिन हम सब सिर्फ बातें करते हैं। वी डोंट वॉक दैट टॉक। जब बात आती है कि आप लोगों ने आपस में कोलैबोरेट करके मिलके फंडिंग लेनी है, तो फंडिंग के टाइम में सारे अपने अपने हो जाते हैं, और जब आप अपने अपने हो गए हैं तो इसका मतलब है आपका वो जो कॉमन इंटरेस्ट था वो आपने खुद लूज कर दिया। ये इशू सिर्फ आप लोगों का नहीं है, ये इशू INGOs का भी इतना ही ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन सप्लायर है इन टर्म्स ऑफ एड। और अगर हम ये कहें कि हमारा कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर फेल हो गया था, तो वो फेल क्यों हुआ था? क्योंकि हम लोगों को ये लगा कि हमारे लिए बाहर से लोग आएंगे और वो आके हमारे स्ट्रक्चर को संभालेंगे। जो हमारा अपना रिसोर्स था हमने उसको इधर रिटेन नहीं किया, या हमने उसको कॉल बैक नहीं किया। हमने ये एडवोकेट नहीं किया कि हमें बाहर से लोग नहीं चाहिए, हमें वो लोग चाहिए जो हमारे सिस्टम को जानते हैं, समझते हैं, वो इसको जल्दी रनिंग में ले आए। हमने इस चीज़ के ऊपर बात नहीं की। हर जब आप फंडिंग के लिए अपने हो जाएंगे तो फिर आप इश्यूज के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि जो चीज़ें आपको मुत्तफिक करती हैं वही चीज़ें आपको आगे जाके डिवाइड कर रही हैं। क्योंकि आपने बातें तो कलेक्टिव की करनी है, लेकिन आपने कलेक्टिव की करनी है, लेकिन जो आपने एक्चुअल एक्शंस किए वो कलेक्टिव नहीं है। तो जब तक आप एक्शंस में कलेक्टिव नहीं होंगे तो सिर्फ बातें आप जितनी मर्जी कर लें कलेक्टिव होने की, वो चीज़ें ट्रांसलेट सही तरह से नहीं होंगी। हमारा ये इशू है एज सिविल सोसाइटी, हमारा ये इशू है एज ए नेशन भी शायद हमारा ये इशू है, और इसको हम लोगों ने खुद एड्रेस करना है। रूट कॉज भी हमें सबको पता है, इधर बैठे हुए हर बच्चे को पता है कि हर इशू का सलूशन क्या है, लेकिन एक्ट करने की करेज कितने लोगों में है? अगर हम ये कहें कि जी हमारे सिर्फ NHN से अमाद है, वो हर जगह पहुँच जाएंगे, वो एडवोकेट करेंगे, तो एक पूरा अमाद जितने मर्जी जाके झंडे एवरेस्ट पे लगा दें, एवरेस्ट उनकी नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक आदमी कितना कुछ कर लेगा।
ठीक है। इसी तरह PHS से हम ये कहेंगे कि आप लोग सारी INGOs जो हैं हमें साथ लेकर चलें, हमारी बातें करें। INGOs आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के बातें नहीं करती, जब फंडिंग की बात आ गई है तो आपकी कैसे करेंगे? तो सही बात है, ठीक है। जो आप लोगों के इश्यूज हैं वही INGOs के भी इश्यूज हैं, और वो लोग उनको सॉल्व करने में नहीं आ रहे, और इसलिए नहीं आ रहे कि हमने फंडिंग को इशू बना लिया। अगर हम अपने आप को एड वर्कर कहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्कर कहते हैं, एक्सेस, सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स और ये सारी चीज़ें ठीक है अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन फिर आप ह्यूमैनिटेरियन इम्पेरेटिव का झंडा ना उठाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें वो हैं जो हमें खुद शायद सेल्फ रिफ्लेक्शन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हम लोग नहीं कर रहे। और जब तक हम वो नहीं करेंगे तो हम हर मीटिंग में, यही 10 साल पहले भी डिस्कशन थी, आज से 10 साल बाद भी यही डिस्कशन होगी, क्योंकि हम सब खुद चेंज की बातें तो कर रहे हैं लेकिन हम लोग चेंज बनना नहीं चाह रहे। Thank you so much, Aisha. This I would like to. I will sum up today's session with 3 messages and 1 commitment from 3 gentlemen, and a very strict commitment that you 3 are always available on a call distance, and you are the voice of our members, our civil society organizations, and you are the true represent. You have to prove the true representatives of humanitarian sector. And with the ladies, that you are basically balancing these 3 gentlemen. So your presence is very much important over here. 3 मैसेजेस जो आज के डिस्कशन से निकलते हैं वो सबसे ज्यादा ये है कि डिसेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म वो आज की, कल की और हमेशा की नीड है, हमें उस पर काम करना है। एक्नॉलेज लोकल पोटेंशियल्स एंड कंसिडर लोकल प्रायोरिटीज। आप जब तक लोकल प्रायोरिटीज को सामने नहीं रखेंगे हम कभी भी सक्सेस की सीढ़ी पे नहीं जा सकते। एक्टिव एंगेजमेंट एंड सपोर्ट विच विल हेल्प टू इम्प्रूव क्वालिटी। आप सबको भी एक्टिवली एंगेज होना है इन सबको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि कल जब हम यहाँ इकट्ठे हो तो हमारे पास ज्यादा सोल्यूशंस हो, इश्यूज कम हो। इसके साथ ही मैं कहूँगी हमारे मैम आरिफा से और मैम मुनज़्ज़ा से टू कम फॉरवर्ड ऑन द स्टेज टू प्रेजेंट शील्ड्स टू द स्पीकर्स। अमाद साहब के लिए सिर्फ दुआएं हैं हमारे पास। आयशा को भी हम अमाद साहब की लाइन में लेके आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर कार्लिस टू प्लीज कम फॉरवर्ड। मैम खड़े हो जाए आप, लेकिन दुआओं के साथ प्लीज प्लीज कार्लिस प्लीज कम फॉरवर्ड। दिस इज फॉर यू। Thank you, Carlos. Now for Shahid. इतनी सीरियस पिक्चर मैंने कभी नहीं देखी। आपने तालियां के लिए Thank you everyone. He is ready. You all are requested to please join us for tea, and after 15 minutes we will resume. आने वाले में मैं सजेशन क्या देंगी, DDMAs का वहाँ पर बहुत एक वाइटल रोल होगा और होना भी, जो कि अनलकीली नहीं है वहाँ पर। हाँ, असाइन किया गया है रोल किसी न किसी गवर्नमेंट के इदारे को, 1122 को किया गया, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को असाइन किया गया। अब था ये कि ये डाटा उनके पास मौजूद ही नहीं था। इवन जब RNA ओशा ने किया उससे पहले भी डाटा मौजूद नहीं था कि कितनी बस्तियां, कितने जिले की कितनी बस्तियां, कितने तहसीलें इफेक्टेड हुई और कितनी कम्युनिटी इफेक्टेड हुई और उस इंस्टीट्यूट क्या क्या है उसका पहला। जब फिर उसके बाद जब फिलैंथ्रोपिस्ट ने
और जो हमारी सिविल सोसाइटी ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रही है, उन्होंने अपने डोनर्स के थ्रू वहाँ पर जब चीजें तस्दीक करने का कहा, तो ये भी हम सब ने देखा कि एनओसी की बात भी उठी कि आप सारा सामान डीसी ऑफिस ले जाएं, डीसी ऑफिस के थ्रू आप बांटें। कुछ एरिया नो गो है कि नहीं जा सकते, तो ये पंजाब की मैं सूरत हाल बता रही हूँ। उसमें भी 2 डिस्ट्रिक्ट में जो इन्होंने किया, बाकी तो डिस्ट्रिक्ट्स में सिविल सोसाइटी खुद ही कर रही है। उसके बाद हमने कुछ वीडियो के तौर पर पीडीएमए को दिखाई थी। फर्स्ट मीटिंग जो सितंबर में हुई, उसमें हमारी एक तंजीम है जो है तो इस्लामाबाद चैप्टर के, लेकिन दे आर वर्किंग वेरी वेल इन पंजाब हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन। उनकी बच्चियों को वहाँ तकसीम किया, उनके काम को हमने वहाँ पे दिखाया। इस तरह से संतानी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी। मुझे याद है फाउंडेशन का भी जो तस्वीरें सारी पहले आप लोगों ने वहाँ पे लगाया था, जो हमने वहाँ दिखाया कि सर ये देखें कि कैंप स्टार्ट हो गए हैं, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें कि नंबर ऑफ इफेक्टिव्स कितने हैं। सो अगर हम ये बात करें अभी जो अच्छा है जो जा रहा है, जैसे अभी कोऑर्डिनेटर्स have started working from the NHN side on a provincial chapter, so it will be a great, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ बनाना शुरू कर दी हैं जो कि गवर्नमेंट का काम है। अच्छा, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में हम डीसीओ के साथ, मैं खुद डीजी काम ही गई, और हमने मुजफ्फरपुर को भी साथ टेकअप किया, सत्यन सामने बैठे हुए हैं, हमने राजनपुर में भी किया क्योंकि वो आपका भी डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ वो सिविल सोसाइटी के मेंबरान जो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट के वो इदारे जो उसको हम सिंक्रोनाइज करने की डुप्लीकेशन वाली सूरत हाल ना है और मिसिंग की भी ना आएगी। हुआ ये था कि डीजी काम ने पुल कंबर से आगे आप जा, एक वक्त ये था, उससे पहले पहले डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी और डुप्लीकेशन हो रही थी। सो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द वर्क, जिसे आप 5W मैट्रिक्स में भी देखते हैं, वो बहुत अहम है मेरी नजर में। हम चाहे देखिए हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं, आज हमारे साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। हमने यूएन ओशा की फुली मीटिंग को वहां पे फैसिलिटेट किया। लियाकत साहब बैठे हुए हैं, लियाकत साहब इटसेल्फ ही वाज देयर, जो यूएन ओशा ने वहां पे मीटिंग की। और उसके बाद हुआ ये कि यूएन ओशा ने जिस वक्त वहां वर्किंग ग्रुप या कुछ भी डेवलप किया, तो वहां पे हम लोग नहीं थे, आरएनए वाले वॉलंटियर्स नहीं थे जो आरएनए कर रहे थे। तो ये गैप है जिसको हमें रिपोर्ट करना है, जिसे हमें आगे सजेशन सकती है कि ये जरूर है कि हम क्योंकि वहीं से हैं तो हमने फर्स्ट रिस्पॉन्स में जाना है, बट आफ्टरवर्ड्स जब उसकी प्लानिंग हो रही हो, जब फंडिंग की बात आ रही हो, जब चीजें हो रही हो, जब कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स बन रहे हो, चाहे एजुकेशन का है, चाहे इवन कि अभी देखिए रिहैबिलिटेशन का काम इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग, सो वेयर एनएचएन मेंबर्स आर स्टैंडिंग। तो हमें ये चीजें थोड़ी सी जो इश्यूज है, हम देखिए 5W मैट्रिक्स आया ऐसे कोऑर्डिनेट, मेरा वॉलंटियर काम ये था कि हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें हम डालते हैं कि ये आज इसकी ट्रेनिंग होगी, वनोशा वाले करवाएंगे, आप इसको देखें, जो जो काम कर रहा है अपनी डिटेल्स भिजवाएं। हमने भिजवा दी, उसकी कंपाइल्ड रिपोर्ट हमें वापस कभी नहीं आती कि हु इज वर्किंग वेयर व्हाट एंड विद हूम। तो इट्स अ वाइस वर्सा, इट्स टू वे, लाइक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इज ओके, इंफॉर्मेशन का एक स्क्रीनशॉट, एक समराइज रिपोर्ट देना इज आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट, ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ कहाँ थे। वो हमें वापस नहीं है। सो सिंक्रोनाइजेशन की मेरे ख्याल से जो है ये इशू जो मैं चाह रही हूँ कि आने वाले वक्त में जब हम सजेशन करें एनएचएन के फोरम से, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अदर देन द आईएनजीओ या एनजीओ जो वहाँ काम करती हैं, उनकी सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुलज़ा बीबी। काफ़ी अच्छी बातें जो हैं, जो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और ख़ासतौर पर एनएचएन मेंबर्स की ऑर्गेनाइजेशन ने पेश किया, और क्या कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म होने चाहिए उसके ऊपर आपने बात की। एक्टिवेशन ऑफ डीजीएमए की आपने बात की, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने की आपने बात की, और जो सबसे अहम था आपकी बात से जो मुझे लगा कि वो रिलीफ एक्टिविटीज़ शुड बी लोकलाइज्ड। बहुत ज़बरदस्त। मैं अभी राजा इफ्तिखार से पूछूंगा कि तुरंत जो गवर्नमेंट की तरफ से या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑन ग्राउंड है, इंटरनेशनल इदारों की मदद से या डोनर्स की मदद से रिलीफ या रिस्पॉन्स का जो काम कर रही हैं, आप उसको किस तरह से देखती हैं, और क्या वैल्यू एडिशन आप समझते हैं कि होना चाहिए ये ओवरऑल जो रिलीफ का काम इस वक्त ऑन ग्राउंड जारी है?
within the context of advocacy issue. शुक्रिया जी जमशेद फरीद साहब और शुक्रिया NHN हमाद साहब के, उन्होंने पूरे पाकिस्तान की 190 प्लस ऑर्गेनाइजेशन को एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा किया और जो हमारे इश्यूज हैं उसके ऊपर हम सब ने कलेक्टिव विजडम भी यहाँ पे दिया और अपनी वॉइसेस को रेज किया। अब सर आते हैं आपके सवाल की तरफ। तो गुजारिश ये है कि एक बात तो हमें बहसीत नेशन समझ लेनी चाहिए कि जो पाकिस्तान है, हमारा जो मुल्क है, ये प्राउड हैजर्ड है। आप अगर पिछले 20-30 सालों की हिस्ट्री देखें, एक तो मैंने जो अपनी जिंदगी में देखा है कि 1992 में फ्लड आया, फिर उसके बाद आप उसको देखें 2010-11 में आया, फिर अब इसमें 22 में है, फिर अर्थक्वेक है, फिर इस तरह कोरोना का जो एक दौर गुजरा है। तो इस तरह दीगर जो छोटे मोटे इस तरह के जो डिजास्टर हो रहे हैं, तो जब तक हमारी कौम और खासकर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारी CSOs हैं, जब तक वो पूरी तरीके से आफात समावी के लिए या जो ह्यूमन मेड डिजास्टर्स के लिए हम तैयार नहीं होंगे, और इसके अंदर दोनों चीजों में मतलब हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों शेप्स के अंदर हमें फुली प्रिपेयर्ड होना होगा, तब जाके बहसीत कौम इसको रिस्पॉन्स कर सके। अब जो हालिया 2022 का जो फ्लड आया उसके अंदर 33 मिलियन पाकिस्तान के अंदर लोग हिट हुए और बहुत बड़े वॉल्यूम के ऊपर हमारी जो ह्यूमन लाइफ है वो डिस्टर्ब हुई, हमारी जमीनें तबाह होगी, हमारी उसके अंदर जो फसलात हैं वो तबाह होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो गया। तो ये लेकिन इतना बड़ा मैं समझता हूँ कि NDA में बन गया और हमारे पास 2005 की जो अर्थक्वेक की बड़ी सक्सेसफुल स्टोरीज थी, उसके बावजूद हम उस तरह का नेशनल लेवल पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना सके कि हम इतने बड़े लेवल के, इतने बड़े मैग्नीट्यूड को हम रिस्पॉन्ड कर सके। तो सबसे काम के वाले से मैं देखता हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पूरे बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर और इसी तरीके से पंजाब के अंदर, KPK के अंदर मतलब भरपूर तरीके से अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए उन्होंने भरपूर उसको रिस्पॉन्स किया। लेकिन अभी तक वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं मिल सका। मतलब जो हम पिछले 10 सालों से जिसका मतलब शिकार है कि NOC नहीं मिली, तो ज़ाहिर अदारों के जो रिसोर्स आने थे वो बंद हो गए, और इसी तरीके से बैंक अकाउंट्स में बेशुमार अदारों के बैंक अकाउंट्स बंद हो गई। बाहर अगर किसी के बहुत अच्छे लैंग्वेजेस हैं भी तो वो रिसोर्स नहीं ला सकता। तो इस वक्त देखें, जब पाकिस्तान इतनी बड़ी माशी बदहाली का शिकार है, तो हमारी गवर्नमेंट की बात क्या नहीं समझ आती कि ये वो विंडो है, हम जो पैसे लाते हैं सर वो ग्रांट होती हैं, जो गवर्नमेंट मिन्नत करके पैसे ला रही है वो तो कर रहा है, जो कई गुना आपने वापस करना है, तो क्यों आप इस विंडो को ओपन नहीं करते, क्यों आप इस सिस्टम को इनेबल नहीं करते। ये जो इतने बड़े स्किल्ड लोग मौजूद हैं मुल्क के अंदर, जो हजारों लाखों की तादाद में मतलब जॉब दे रहे हैं, असिस्टेंस दे रहे हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये बात पूरी कमिटमेंट से कर रहा हूँ, क्योंकि 2005 का जल्जला जो आजाद कश्मीर में आया, तो वो सब हमारे ऊपर से, मैं उसका खुद विक्टिम रहा हूँ। तो अगर हम उसके अंदर एक एनालिसिस लें, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि 90-95% जो वहां पे काम हुआ है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। हमारा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, हमारी रोड्स बनी हैं, हमारे BHUs बने हैं, हमारे स्कूल बने हैं, हमारा जो एग्रीकल्चर के ऊपर काम हुआ है, लाइवलीहुड के ऊपर हुआ है, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, तो ये सारे का सारा ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, ये आप लोगों ने किया है, ये पाकिस्तानी कौम ने हमें सपोर्ट किया है। तो अगर उस तरह का 2005 वाला एनवायरनमेंट यहाँ पे नहीं बनता है, तो आज भी बड़ा दुख होता है। मैंने अभी पिछले दिनों बाई रोड कराची का ट्रेवल किया, तो मैंने देखा कि अभी भी सिंध का बड़ा हिस्सा जो है पानी में डूबा हुआ है, और लोग किस तरह की, राजनपुर में हमने जाके काम किया, वहां के हालात मैंने देखे, जो पॉवर्टी देखी, जो वल्नरेबिलिटी देखी। हम KPK में गए, और मैं आज फोरम पे बड़ा प्राउडली बात बताता हूँ कि किस दफा कश्मीरी कौम ने हर वक्त फिक्र ने, कश्मीर की ओवरसीज ने, कश्मीर के लायर्स ने, कश्मीर की जो तलबा यूनियंस हैं, कश्मीर की ट्रेड यूनियन ने, कश्मीर के जो इंडिविजुअल फिलैंथ्रोपिस्ट ने बड़ा बढ़ चढ़ के अपने पाकिस्तानी भाइयों को सपोर्ट किया। लेकिन अब जो मसला है सर, वो ये है कि जो करने वाला काम है हमारे साहब, पिछले 10 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है, बेहद बेहतरीन काम हुआ है। नेशनल लेवल पे जो हमारा NHN का स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत हुआ है, ग्लोबली कनेक्टिविटी हो गई है।
तो लेकिन अभी तक जो हमारे साथ चैप्टर है जिसका मैं खुद हिस्सा हूँ, अभी जो हम अगली 3 साल की जो प्लानिंग बनाने जा रहे हैं, और ये मैं फ्लड के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ, जब तक हमारे चैप्टर मजबूत नहीं होंगे, जब तक देखें हमारी जो 190 ऑर्गेनाइजेशन है ये चैप्टर की है, इस्लामाबाद की भी यहाँ पे कोई 1-2 ऑर्गेनाइजेशन में मुझे नजर आ रही, ये सारे लोग चैप्टर के। तो जब तक सर हमारा चैप्टर मजबूत नहीं होंगे और चैप्टर की जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जो बात हो रही है, वो गवर्नमेंट के साथ भी जो हमारी कोऑर्डिनेशन है, उसमें हमारी कोऑर्डिनेशन एनडी में पीडीएमए के साथ जो हमारी है, वहां पे जितने भी हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी हायरार्कीज है, डिपार्टमेंट है, जितने भी लैंड डिपार्टमेंट्स हैं, जब तक हम उनको अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर एंगेज नहीं करेंगे, और गवर्नमेंट जब तक हमारे सेक्टर को, हमारे काम को एक्नॉलेज नहीं करेगी, समझेगी नहीं, तो उस वक्त तक जो हमारा वो जो हमारा विक्टिम हुआ है, जो फ्लड से मुतासरा जो आज के जो हालात है, मतलब उस वक्त तक चीजें बेहतर नहीं हो सकती। अब मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि चीजें डिसेंट्रलाइज भी हो, और अब हमारे सेक्टर की जो चीजें हैं वो मतलब वो प्रोविंस के अंदर जाए, वहां पे जाके बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म डेवलप हो, वहां पे ये हमारी सारी एक्टिविटीज भी हो, प्लानिंग भी हो, और गवर्नमेंट को बिल्कुल हमने जो कल आपने बड़ी अच्छी बात की कि जी हमने टेबल पे उनके साथ बैठना है, और बैठ के हम जाके इसको कर सकते हैं। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम है, और मैं समझता हूँ कि 5 से 10 साल लगेंगे रिहेबिलिटेशन के उस फेज में, और उसके अंदर मैंने जितने भी हमारे चैप्टर के दोस्त हैं सीसी के, मैंने उनसे अक्सर बात की कि मुझे ये बताएं कि फ्लड के बाद आपने कितने एग्रीमेंट्स किए, आपको कितने फंडिंग की एक्सेस हुई है। मैंने अपना चुकाव वालों से पूछा है, चले कश्मीर में तो बहुत कम हुआ है, वह वहां पे लैंड स्लाइडिंग हुई है, मतलब 35-40 लोग डेथ हुए, काफी सारी चीजें हुई है, लेकिन बड़ा जो हमारे डैमेजेस है वो यहाँ पे हुआ है। मैंने कैपी के फरीदुल्ला साहब से पूछा है, उन्होंने कहा अभी तक कोई हमारा इस तरह का कोई बड़ा एग्रीमेंट नहीं हो सका, अभी तक हम किसी बड़े लेवल पे मतलब कोई इस तरह की चीजें नहीं ला सके कि जो हम लोकल लोगों को फैसिलिटेट कर सके। तो अब जो बात यह है कि हमें वाइस बनना है, वो जो हमारे लोग हैं चैप्टर के जो लोग हैं उनके लिए, और अपनी प्लानिंग के अंदर हमें जो ना जो चैप्टर है उनको एम्पावर करना है पॉजिटिवली। जी जी डॉक्टर साहब, दो चीजें जो आपके डिस्कशन से निकल कर आई कि इनेबलिंग इन्वायरमेंट के लिए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को बात करने की जरूरत है स्टेक होल्डर्स के साथ, कि अगर इन्वायरमेंट और उनके लिए स्पेस नहीं होगी तो वो शायद कंफर्टेबली काम नहीं कर सकते। और दूसरी जो चीज़ थी वो जितनी हमने एफर्ट्स करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रोविंस लेवल पर जो हम फंड यूटिलाइज करते हैं और गवर्नमेंट के साथ हम अपने अलाइन करते हैं अपनी चीज़ों को, वो कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, लेकिन स्टेट के साथ खड़े होने का जो हम सबूत देते हैं उसको डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है कि हमने किस डिस्ट्रिक्ट में कितना काम किया और उसकी क्या वर्थ है। वो जब तक सामने नहीं आएगी तो हमारी स्पेस शायद क्रिएट नहीं होगी। मैं अब फरीदुल्ला साहब की तरफ आऊँगा, केपी चैप्टर के चेयरपर्सन हैं, कि चूँकि फ्लड का जो या एनी डिजास्टर है, एक टाइम होता था जिसमें ये एज्यूम किया जाता था कि ये सीजनल एक इशू है, जुलाई अगस्त आएगी फ्लड्स आएंगे, मानसून आएंगे फ्लड्स आएंगे, रिलीफ रिस्पॉन्स होगा, दैट्स ऑल। तो जो इस वक्त पाकिस्तान का सिनेरियो बना है, जो क्लाइमेटिक असरात इनके पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहे हैं, या जिस तरह की अनसर्टेन सिचुएशन है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं या डोनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पाकिस्तान में बेस हैं, उनको किस तरह से रिस्पॉन्सिव होना चाहिए कि वो किसी भी इमरजेंसी को एट द टाइम इफेक्टिवली रिस्पॉन्स कर सकें। जैसे कल बात हो रही थी, मेरे ख्याल से नसीर मेमन साहब ने की है कि मैं विटनेस हूँ कि पहले 7 दिन तक लोगों तक कोई नहीं पहुँचा। तो ये इस तरह के सिनेरियो जब होता है तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस जो है इदारों की वो किस तरह से इम्प्रूव की जा सकती है? थैंक यू साहब और सारे NHN मेंबर्स का बहुत शुक्रिया कि अपने काम को छोड़कर जनरल असेंबली अटेंड करने के लिए हम आए हैं। जहाँ तक सवाल का ताल्लुक है तो उसका मैं सवाल ये दूँगा कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान एक डिज़ास्टर प्रोन कंट्री है और हर साल या 2-3 साल बाद डिज़ास्टर आते हैं, हमें हिट कर जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट का और ना सिविल सोसाइटी का ना
डोनर का किसी का भी अकेले के उसका काम नहीं है। ये हम सब ने मिलकर इस तरह की जो एमरजेंसी आएंगी उनको हमने मिलजुल के सब स्टेक होल्डर ने मिल के उनका रिस्पॉन्स देना है। अब चूँकि आपने सवाल किया है डोनर्स और जो हमारे पार्टनर हैं जो सिविल सोसाइटी है उनका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो एज ए सिविल सोसाइटी हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। हमें अपनी जो हमारी तैयारी है वो हमें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हम 2005 से मुसलसल देख रहे हैं कि हर साल 2 साल बाद 3 साल बाद वक्फे से डिजास्टर आते रहते हैं। कभी एक एरिया हेड हो जाता है, कभी दूसरा एरिया हेड हो जाता है। तो 2010 के बाद जब से NHN बना है इस पर बहुत ज़्यादा काम भी हुआ है। हमने अगर आप देख लें 2012-13 से हमने NHN ने और जो बाकी जो पार्टनर है हम लोग पैटर्न पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, ट्रेनिंग दे दी है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक सी सोच की लिए वो है कि उनका जो हमारे ग्राउंड लेवल पे जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हमारा नेटवर्क है। आप जो हमारे CBOs का है तो उनको हमें इंगेज कर देना चाहिए और उनकी जो हमने बनाए हैं अपने टीम के किसी भी डिज़ास्टर के लिए तो उनकी प्रॉपर वो हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग का इनिशिएटिव है वो हमें साथ रखना चाहिए। सेकेंडली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमारा एक डिज़ास्टर में रिस्पांस मैनुअल होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब भी कोई डिज़ास्टर आ जाता है तो लोग जो इवन एक हाइजीन किट्स के लिए भी वो दूसरों से मांगते हैं कि यार कोई हाइजीन किट का अगर आपके पास कोई मैनुअल हो, कोई लिस्ट हो, वो हमें हमारे साथ शेयर करें। तो ये पीस के टाइम का काम है। अगर हमने इफेक्टिव ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस देने हैं तो इन चीज़ों को हमने इम्प्रूव करना है। इसके अलावा ट्रेन स्टाफ हमारे साथ होना चाहिए और अगर हम स्टाफ को रिटेन नहीं कर सकते तो हम एक रोस्टर बना लें। जैसा NHN में हमने एक प्रैक्टिस किया था, हमने एक एक्सपर्ट स्टाफ का पूल बनाया था और वो हमने बहुत बड़ा एक्सरसाइज किया था। पूरे पाकिस्तान से लोगों को जो एक्सपर्ट्स है उनकी CV को हमने इधर जमा किया था और उनका एक ऑनलाइन सिस्टम बना था। और वो इसलिए था कि जब भी कोई इमरजेंसी आएगी तो ये लोग अवेलेबल होंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है इनको एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा हमने ऑर्गेनाइजेशन ने स्टॉक किया था कि कंटीजेंसी स्टॉक होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, क्योंकि हमें पता है कि टाइम टू टाइम डिजास्टर आता है तो हमारे पास अपना कंटीजेंसी स्टॉक होना चाहिए। ये तो कुछ चीज़ें थी जो CSOs के लेवल की थी। अब मैं डोनर की तरफ अगर आ जाऊँ तो IN जो यहाँ पे बैठी हैं UN के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको चाहिए कि वो कंटीजेंसी MOU साइन करे पार्टनर के साथ एडवांस में। अगर कोई भी डिजास्टर आ जाए तो वो जो MOUs होते हैं वो इफेक्टिव हो जाने चाहिए। और मतलब जब डिजास्टर आता है अपने इस डिजास्टर में भी लड़की भी देख लिया कि जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा हो जाता है, तो महीनों वेट करना पड़ता है। तो इसके लिए अच्छी बात ये है कि आपकी कंटीजेंसीज MOUs हो, जब भी डिजास्टर हिट कर ले आप वो MOU एक्टिव बन जाने चाहिए और ये रिस्पांस स्टार्ट करने चाहिए। जिस तरह रेडी पाकिस्तान का जो मॉडल है कि जब भी वो एडवांस में प्रपोजल इंक्लूड कराते हैं, एडवांस में वो 48 आवर उनका रिस्पांस शुरू हो जाता है। तो इसी तरह और भी डोनर्स को इन चीज़ों पे सोचना चाहिए। सेकेंडली पूल फंड होना चाहिए। जिस तरह हमारा पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन पूल फंड था या जो भी हमारा स्टार्ट नेटवर्क का पूल फंड है या नियर नेटवर्क का जो हमारा चेंज फंड है, इस तरह बहुत से फंडिंग विंडो होनी चाहिए जो इमरजेंसी के सिचुएशन में हमारे जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको एक्सेस करें। और डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन और NGO से एक और रिक्वेस्ट भी ये है कि वो अपने जो पार्टनर हैं जो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं उनको फंड दे रहे ताकि वो जो उनकी कंटीजेंसी स्टाफ हो वो उनके पास अवेलेबल हो और इनके साथ इमरजेंसी जिस तरह आपने बात की कि 10 दिनों तक कोई रिस्पांस नहीं हो सकता, तो उसकी वजह ये थी कि कोई कंटीजेंसी वो नहीं था और मतलब जो एंटिसिपेटेशन था वो नहीं। बहुत शुक्रिया फरीद साहब। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपकी तरफ से आए, जैसे ह्यूमन कैपिटल की बात आपने की, कंटीजेंसी प्लानिंग की बात की और स्पेशली पूल फंडिंग की और डिजास्टर रिस्क फाइनेंस की जो आपने अभी बात की है कि वो प्री सेट और पहले से तैयार शुदा चीज़ें जो हैं वो सेट की जाए, MOU साइन हो ताकि मिनिमम टाइम में हम इमरजेंसी को रिस्पॉन्स कर सकें। अब मैं करामत साहब की तरफ आऊँगा। करामत साहब हमारे
गिलगित बिल्तिस्तान के चैप्टर के चेयर हैं कि आमतौर पर इंटरनेशनल या इवन के लोकल ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब ये इमरजेंसी आती है तो उस वक्त इतना टाइम नहीं होता कि वो नीड असेसमेंट करें, तो वो ओवरऑल चीज़ों को देखकर प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं और अपना रिस्पॉन्स इनिशिएट करते हैं। लेकिन आमतौर पर बहुत कम कम्युनिटी को कंसल्ट किया जाता है, जो एक्चुअल विक्टिम्स हैं डिजास्टर्स की उनको कंसल्ट नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि हम अपने ओवरऑल रिस्पॉन्स में कम्युनिटी की जो से है, जो मुतासरीन है एक्चुअल, उनको हम अपने सिस्टम में किस तरह से इफेक्टिवली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि उनकी नीड्स क्या हैं और उन्हीं के थ्रू हैं, और वो बाकी जो प्रोसेसेस हैं हमारे मॉनिटरिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का है, इम्प्लीमेंटेशन का, प्लानिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह से उनकी से कम्युनिटी के हम इंश्योर कर सकते हैं। थैंक यू जमशेद साहब। सबसे पहले तो मैं अमाद साहब का और जो हमारे पार्टनर डोनर ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो हमारे NHN सेक्रेटरीट और जो हमारे CC के मेम्बरान हैं उनका खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा कि इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म ख़ास तौर पे लोकलाइजेशन के हवाले से और जनरल बॉडी का भी इजलास करके यहाँ शेयरिंग आइडियाज़ का एक मौका हमें फराहम किया। आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ। सबसे ख़ास तौर पे जब चूँकि मुख्तलिफ सूबों के हवाले से बात हो गई तो गिलगित बल्तिस्तान ख़ास तौर पे हम जो पहाड़ों के जो संगम में रहने वाले लोग हैं, पहला हिट जो है पहाड़ी इलाके होते हैं और वहाँ का सिनेरियो भी मैदानी एरिया से टोटली डिफरेंट है। और जब वहाँ सैलाब आते हैं तो वहाँ का मुकम्मल तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। वहाँ आपकी न गाड़ियाँ चलती हैं न और कोई सिस्टम मुकम्मल तौर पे। तो इस हवाले से जो फौरी तौर पे इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, इसके लिए मेरी तजवीज़ ये है कि हमें ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ वहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं कर सकते, वहाँ छोटी छोटी वैलियाँ हैं, आप यूनियन काउंसिल लेवल पे जब तक स्टॉक्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए वहाँ अवेलेबल नहीं करेंगे, जहाँ लोगों के घर भेज जाते हैं, ऊपर से फ्लड आता है, तो आप टेंट आपके पास जब तक गांव लेवल पे अवेलेबल नहीं होंगे तो आप उस दौरान फौरी तौर पे रिस्पॉन्स कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें इस हवाले से ख़ास तौर पे फौरी इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए स्टॉक, इमरजेंसी स्टॉक वहाँ हमें अवेलेबल करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो ख़ास तौर पे जो हमारे सरकार के लेवल पे कोऑर्डिनेशन का फुकदान होता है, उनके अपने पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशंस को काम करने नहीं देते हैं, तो इसमें बहुत सारे इश्यूज पैदा होते हैं। तो इस साल के मेरे ख्याल में 2022 के एक्सपीरियंस को देखते हुए NHN ने काफ़ी लॉबिंग किया है। जो NOCs के जो इश्यूज हैं इसको फौरी तौर पे एड्रेस करके जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस अपने लेवल पे एज ए वॉलंटियरी तो अपने सर्विसेज डेफिनेटली वहाँ देते हैं, लेकिन फौरी तौर पे डोनेशन के हुसूल के लिए जो तरीक़ेकार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाने की ज़रूरत है, ताकि सरकार की जो कैपेसिटी है वो तो है ही नहीं, वो मुश्किल से कहीं जाके एक हफ्ते बाद पहुँच जाते हैं और कहीं से हमारे रोड ख़राब होते हैं तो वो काफ़ी अर्से तक पहुँचते ही नहीं। तो इसमें कम्युनिटी की से हम किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं उनकी कंसल्टेशन और पूरे प्रोसेस? उस प्रोसेस में फौरी तौर पे तो ये है कि फर्स्ट जो रिस्पोंडेंट है वो हमारे NHN के मेम्बरान हैं जो हमारे कम्युनिटी लेवल पे हमारे काम करते हैं। फौरी तौर पे नीड असेसमेंट हमें करने की ज़रूरत है विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर वहाँ मसाइल क्या है। हमने 2022 में भी 2010 में भी ये देखा है कि वहाँ ऑन द ग्राउंड लोगों की ज़रूरियात क्या होती है। यहाँ से लोग टूथपेस्ट लेके आते हैं या साबुन लेके आते हैं, वो इनिशियल उनकी ज़रूरियात नहीं है, वहाँ उनका घर बन गया है, उनके पास जो है पकाने के लिए चीज़ें नहीं हैं और उनके सामान सारे मुकम्मल तौर पर देख चुके हैं कि हमारे पास यहाँ जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं वो आते हैं, तो वो हमारे लिए मिसाइल पैदा होती है। तो फौरी तौर पे
हमारी असेसमेंट वहाँ पे हो जाए और उसी बेस पे अगर रिस्पांस स्टार्ट की जाए तो मेरे ख्याल में और लोगों को बेहतर तरीके से रिलीफ मिल सकती। जी जी रामा साहब बहुत शुक्रिया। मैं अब मरी साहब की तरफ आऊँगा। मरी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस्लामाबाद चैप्टर के चेयर के हवाले से, अभी चूँकि उनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब क्या देखते हैं क्योंकि जो लोकल इश्यूज हैं फिर वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हाईलाइट होते हैं, फिर हम उनको नेशनल लेवल पे देखते हैं एज अ सिविल सोसाइटी नेटवर्क और स्पेशली एज अ इस्लामाबाद चैप्टर। आप क्या देखते हैं कि इस्लामाबाद चैप्टर का एज अ एडवोकेसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ्लड के बाद की जो सिचुएशन है इसमें एडवोकेसी रोल क्या बनता है और हम उसको कितनी हद तक अचीव कर चुके हैं? जी थैंक यू भाई साहब। हमने तो पहले तो सारी बातें ये डिस्कशन जो है से शुरू करने से पहले जो सिनारियो है, अब हम सबको पता है कि जो बलूचिस्तान में जो पहले जो सैलाब आया वो 25 जुलाई था और उसमें अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन को जब जो मौके जो है एक्सेस जो मिली वो जाके यानी कि समझे कि अगस्त के जुलाई अगस्त के में मिली। और यानी कि अगर मैं नाम लूँ यहाँ पे हमारी जैसी इदारा जो है उसको भी थ्रू हेलीकॉप्टर जो डिस्ट्रीब्यूशन करने का मौका मिला, वो भी क्योंकि साहिल एनजीओ जो पाकिस्तान नेवी की वो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन थी 29 जुलाई को 25 29 जो बिल्कुल नसीर साहब जो बातें कर रहे थे कल जो बिल्कुल बजा थी, उसके बाद के इशू जो है वो हम सबको बताएंगे क्या। बहरहाल डिस्कशन की बात हम करें तो 81 डिस्ट्रिक्ट 33 मिलियन पॉपुलेशन और 2005 का अर्थक्वेक अगर हम देखें 2010 का अर्थक्वेक सारी ये फ्लड जो है जिसको हम उस वक्त महाबोर्ड या जो सुपर फ्लड कह रहे थे वो सारे रिकॉर्ड जो है ब्रेक हो गए और इस वक्त की जो है तो उसमें फिर जो आपका क्वेश्चन है कि फंडिंग का जो ओवरऑल जो हमारे पास जो इस वक्त हम रिस्पांस कर सके हैं उसमें मैं फोरम पे भी डिफरेंट फोरम में भी कहा है यूएन एजेंसीज के साथ मिलकर भी यहाँ उनके साथ जो डिस्कशन हुए कि वही ऑल यानी कि इसमें गवर्नमेंट के हों चाहे ऑर्गेनाइजेशन जो है चाहे आईएनजीओ हों चाहे हम लोकल ऑर्गेनाइजेशन हों चाहे हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट हों, जिसमें जो फिलैंथ्रोपिस्ट पे भी दो सपोर्ट हमें यानी कि वो ओवरऑल हम सबको मिलती है उस पर एक डोनेशन की शक्ल में और दूसरा फेस फेस यानी कि ज़कात की शक्ल में। ये सारा मिला के भी हम कोई 25% पॉपुलेशन को रीच कर पाए और अभी भी कोई 75% या 70% पॉपुलेशन जो है हम सब की तरफ नजरें उनकी हैं कि ये कब आएंगे और क्या हम सपोर्ट करेंगे। ये जनीवा के अंदर जो डिस्कशन हो रही है ये सारी चीजें, तो एक तो मेजर इशू यही है अब हमारे पास। और कल भी साथी हमारे बता रहे थे, सागर के साथी बता रहे थे और हम लोग वहाँ पे मौजूद है कि अभी भी काफी यानी कि डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें पानी जो है अभी भी मौजूद है और काफी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक जो है वो कुछ लोगों ने कर अपनी हेल्थ बेसिस पे कल्टीवेशन वगैरह की, मगर फिर भी फूड एंड सिक्योरिटी के चैलेंज जो है अभी भी उनसे जो है वो निपटने का जो है शायद हम में ताकत जो है वो कम हो। मैं कम्युनिटी के लेवल पे बात हम कर रहा हूँ मगर ये एक अलग सिनेरियो है। तो फंडिंग का जो है वो सबसे बड़ा इशू है और सबसे बड़ी बात कि अगर हम क्योंकि हर किसी की अपनी कहानी, हम लोग अपने यहाँ पे जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन बैठी है, अब हमने सुबह भी जो हमारी की प्रेजेंटेशन थी हमने रियलाइज किया कि ये हम लोगों को क्योंकि हम जो ज्यादा क्लोज है उनको ज्यादा पता है और सारी साथियों के लिए भी था कि देखिए 60% पाए जो है वो यूएन एजेंसी के पास है और मैकेनिज्म क्या है और उनका भी आज मेरा था कि हम क्वेश्चन करें उसमें कि तो अगर उनके पास अगर 2005 से मौजूद है और हर दफा वो लोग सामने होते तो वो लोकलाइजेशन की जो एजेंडा है उनके पास वो कितनी एडॉप्शन उस पर वो लेके जा रहे हैं, तो ये अलग एक इशू है। मगर हमारा सिर्फ जो इस्लामाबाद चैप्टर के हवाले से करें या एनएचएन एज ए होल हम जो बात करें तो वो सबसे बड़ा कलीदी किरदार जो हमें नजर आ रहे हैं तो ये कि फंडिंग का क्या सोर्स हो और डिफरेंट नेटवर्क जहाँ जहाँ हमें मौका मिले हम अपना वॉइस रेज करें कि अभी भी काफ़ी लोग हैं चाहे वो बलूचिस्तान के हों चाहे वो सिंध के हों चाहे पंजाब के जो हमारी तरफ देख रहे हैं और उनके लिए काफ़ी कुछ हमें जो है वो करने की ज़रूरत है।
जी बहुत शुक्रिया रहीम मती साहब। चूँकि इस्लामाबाद बड़ा भाई है और आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं एक्चुअल और जो सर्व्ड है पीपल और जो लीज सर्व्स हैं और जो अभी तक एड्रेस भी नहीं हो चुके उनके फैक्ट्स एंड फिगर हम जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं या इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान बैठी है मुख्तलिफ तौर पे उनके साथ उनको उठाने की ज़रूरत है ताकि वो हाईलाइट हो और उन तक जो है वो प्रॉपरली रिलीफ का पूरा एक चैनल जो है वो मूव कर सके। मैं अब आऊँगा नसीर चन्ना साहब के पास। बलूचिस्तान चूँकि सबसे पहले फ्लड आया था और इस दफ़ा जो बलूचिस्तान में फ्लड आया वो पिछले तमाम रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए और उसकी रिस्पांस की चूँकि वैसे ही उसका जो स्ट्रक्चर है आबादी जो है उसकी बड़ी स्कैटर्ड है, इस तरह की नहीं है जिस तरह के बाकी हमारे दीगर सेटल प्रोविंसेस में है। तो मैं पूछना ये चाहूँगा नसीर साहब कि एज अ लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है फ्लड्स के हवाले से थ्रू आउट द ईयर हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास रिसोर्सेज का भी मसला होगा, हमारे पास फंड्स का भी मसला होगा और चूंकि फर्स्ट रिस्पोंडेंट छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और फिर जिन लोगों के साथ काम करना है उनकी एंगेजमेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया जमशेद साहब और शुक्रिया जो है अहमद साहब और जो है जो हमारा नेशनल सेक्रेटरीट है ये वो अच्छा इवेंट जो है इतना मौसर और जो अपॉर्चुनिटी ये वो कि हम सबका इवेंट है जितने भी मेंबर हैं हर चैप्टर से हम सबका जो है ये इवेंट है। अभी जो है आता हूँ आपके क्वेश्चन पे। इस तरह है कि जैसे पिछला भी एक जो सेशन अभी रहा जो जिसमें जो है ओचा और दूसरे जो है अभी जो डिस्कशन हो रही थी ये भी उसी की जो है ना ये कंटिन्यूएशन है, ये उसी से जो है रिलेटेड एक वो है कि ओवरऑल जो हम जो पॉइंट्स हम यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं वो एडवोकेसी के हवाले से है कि जो प्रोविंसेस में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चैलेंजेस हैं इस वक्त जो है ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस में उस पे जो है हम बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जैसे हर डिजास्टर में चाहे वो फ्लड हो चाहे इसके अलावा जो है बलूचिस्तान तो इसमें जो पूरा मुल्क जो है मतलब डिजास्टर प्रोन है जो है वो हेजर्ड्स जो है मुख्तलिफ आते हैं लेकिन हम जो है बलूचिस्तान में जो है इस वक्त जो है फ्लड की सिचुएशन इसके अलावा जो है विंटर जो है जो सर्दी की जो सिचुएशन है बर्फबारी है रास्ते वगैरह बंद हैं तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है ना हमेशा जो है वो कम्युनिटी ही होती है। आपने क्वेश्चन किया कम्युनिटी के हवाले से हमेशा जो है मतलब डोनर है या गवर्नमेंट है वो तो एक हफ्ते के बाद जो है पहुंची है ना। फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है हमारी वहाँ पे जो लोकल एनजीओज हैं या नेशनल एनजीओज हैं या उसके अलावा कम्युनिटी है ये जो है हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। तो इन्होंने जो है जैसे अभी फॉर एग्जांपल जो है ना कोई भी वहां नहीं पहुंचा था तो लोगों ने अपनी मदद आपकी तरह जो है तैयार जो है पका हुआ खाना जो है वहां पे तकसीम किया, लोगों को जो है रेस्क्यू किया। ये एक बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन था। गवर्नमेंट तो बाद में आई ना तो इसके अलावा जो वहाँ पे सीपीओज हैं वो है। दूसरा मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा कि जो एनओसीज के जो हमारे मतलब इश्यूज हैं वो कि मतलब हमारा प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पीडीएमए के साथ एक अच्छा जो है रिलेशन है लेकिन थोड़ा सा जो हम ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। एक प्रोजेक्ट है वो डिजास्टर मतलब आप इमरजेंसी के लिए अप्रूव होता है उसके लिए आप एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं उसमें आपको 8-10 दिन लग जाते हैं। उसके अलावा जब आपको पीडीएमए से एनओसी मिलती है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं डिप्टी कमिश्नर के पास, वहाँ पे एक और जो है प्रोसेस आपका वेरिफिकेशन का होता है। बिल्कुल यहाँ पे हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि बिल्कुल आपने जो है ना एक यूनियन काउंसिल XYZ जो भी है आपने प्रपोज की है और आपका डोनर उसको अप्रूव भी कर चुका है। यहाँ पे डीसी साहब जो है ना उसका पॉलिटिकल भी अपने उनकी चीजें होती हैं क्योंकि वो उनके एमएलए एमपी उसमें 6 से होते हैं तो वो कहते हैं नहीं फला यूसी नहीं
आप फलां यूसी में काम करें, फिर यहाँ पे और हमारा जो है टाइम लग जाता है, फिर अप्रूवल लेने में, और इस तरह का जो है एक ये भी जो है ना इशू चल रहे हैं। इस वक्त जो है मैं आपको बात बताऊं, इस वक्त जो हमारा कोऑर्डिनेशन लेवल है, जो एफर्ट्स हो रही है वो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कि अभी NHN ने भी जो है सपोर्ट की है, लेकिन इससे पहले भी जो है जो बलूचिस्तान NHN जो चैप्टर है, हम पहले से भी जहाँ पे डिजास्टर ज्यादा आया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे डिजास्टर कम आया है, फ्लड कहीं पे ज्यादा आया है। फॉर एग्जाम्पल नसीराबाद डवीर में जो है फ्लड ज्यादा आया है, जहाँ तक अभी भी सोबरपुर और जाफराबाद में सिंध की तरह अभी भी वहाँ भी अभी भी तक पानी खड़ा हुआ है। वहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने कोशिश की है कि जो फोरम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको एक्टिव किया जाए, कुछ न कुछ हमें जो है ना कामयाबी मिली है। अभी ये एक हफ्ता पहले की बात है कि डिस्ट्रिक्ट किला सैफुल्ला में जो है इस वक्त जो ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस चल रहा है, तो उसमें जो है ना हालांकि 9 ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे काम कर रही है किला सैफुल्ला में। अचानक जो है ना वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक लेटर निकाला, एक जो है नोटिफिकेशन के तमाम NGOs के जो है ना NOC उन्होंने कैंसिल कर दी। जब ये जो है अगले दिन हम तक खबर पहुंची तो इसकी रीजन मालूमात की कि इसकी रीजन क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई जो NGO है ये अपनी रिपोर्ट्स वगैरह जमा नहीं करती है, या जो मेरे इंस्ट्रक्शन पे काम नहीं करती है। हमने इसका फिर फौरी तौर पे हल निकाला, हमने कोऑर्डिनेशन की। एक तो अब विद इन जो है जो भी NGOs थे हमने उनके साथ PHF और NHN ने हमने इनकी कोऑर्डिनेशन की, ज्वाइंट हमने मीटिंग रखी। इसमें जो ओचा से जो तनवीर साहब थे उन्होंने भी वहाँ पे हमारा पार्टिसिपेट किया। फिर जो हमने एक लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को, जो है ना एक ज्वाइंट हमने लेटर लिखा, और उसका जो है मतलब बड़ा ही अच्छा असर हुआ। और जो है वो फिर उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मरासला जो है लिखा डिप्टी कमिश्नर जो है किला सैफुल्ला को, और उसमें जो है ये एक अच्छी बात है कि उसने जो है पॉइंट किया है कि जो दूसरे जो वो जहाँ और भी मतलब इस तरह का ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस है, तो उनके लिए भी एक अच्छा हो जाएगा कि वो काम कर सकेंगे। तो वो मतलब ये इशू हमने किला सैफुल्ला में NOC वाला, उन्होंने फिर डिप्टी कमिश्नर से जो है डिप्टी कमिश्नर ने उन ऑर्गेनाइजेशन से दोबारा रब्ता किया कि आप आए और हम आपको दोबारा NOC देते हैं। क्योंकि बात हो रही है एडवोकेसी के हवाले से, हम यहाँ पे वो हर्डल्स कम करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि जो अफेक्टेड कम्युनिटी है, और उनके लिए जो है ना मतलब जल्दी हम उन तक पहुँच सके। तो दूसरा सॉरी आपका एक मिनट, जहाँ पे मतलब वो आप बात कर रहे थे कि वो पूरा साल और इस तरह से जो है कि किस तरह से जो है, इसमें जो है देखिए हम अक्सर जो है ना जैसे 2010 में फ्लड आया, 2012 में आया, उसके बाद फिर हमने जो है ना बहुत सवियर जो है ड्राउट वहाँ पे देखा, और फिर 2020 में जो है हमने जो है वो सुनूफान इमरजेंसी बलूचिस्तान में। तो मतलब ये है कि हम उस वक्त जागते हैं जब डिजास्टर आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो हम सिविल सोसाइटी है या जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस है, अभी जो है ना अपनी कैपेसिटी मतलब लोगों की जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड करना पड़ेगा, और अपनी जो है डिजास्टर रिस्पांस की जो कैपेसिटी है उसको जो हमें बिल्ड करना पड़ेगा। वो मतलब ये है कि दो लेवल पे है। एक तो मतलब ये है कि हम अपने जो हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे इदारे हैं उनमें हमारी ऐसी पॉलिसी हो, हमारा स्टाफ ट्रेन हो। इसके अलावा जो है ना हमारे फिर वो जिस तरह जो है पहले भी किसी साथी ने कहा कि हमारे ऐसे मेरी MOU साइन हो ताकि जो हम फौरी तौर पे जो है रिस्पॉन्स कर सकें। जी शुक्रिया, शुक्रिया नसीर सर। टाइम चूंकि बहुत कम है तो मैं आखिरी क्वेश्चन करूंगा वली साहब से। सिंध से, चूंकि सिंध सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है इस्तीफा इमरजेंसी में, मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि ओवरऑल इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आप NHN का क्या रोल देखते हैं रिलीफ रिस्पॉन्स के लिए, ये फ्लड या डिजास्टर कम्युनिटी की के इश्यूज के हवाले से, और स्पेशली NHN के मेंबर्स हैं, चूँकि NHN उनके मेंबर ही हैं एक्चुअली। तो अब रोल ऑफ NHN और उनके मेंबर्स का आप क्या देखते हैं पूरे सिनेरियो में? शुक्रिया। बुनियादी तौर पर डिजास्टर्स की हिस्ट्री है वो पाकिस्तान में
NHN मौजूद है और मखसूस से शुरू हुई प्रोफेशनली। और अहम जो चीज़ है वो ये है कि 2007 में भी फ्लड आई बलुस्तान से सिंध में, 2010 का भी फ्लड आया वो बड़ा था, फिर आगे चल के फिर 2011 का सिंध में रेन फ्लड आया जो लोअर सिंध में था, और उसके बाद जो है वो ड्राउट सिंध में आया और कोरोना आया। ये सारी चीज़ों पे लोगों 2010 के बाद तो NHN के साथ में काम किया, तो इस मरतबा 2022 में बड़ा फ्लड आया, वो भी रेन फ्लड। हम तो सोचते थे कि नहीं फ्लड जो आएगा वो इंडस रिवर से आएगा, इस मरतबा इसके उलट हुआ है कि नहीं, ऊपर से बरसात पड़ी और वो भी मुसलसल चलती रही, एक मरतबा तो वो 74 घंटे चली। और इसमें वो तंजीमें जो NHN की मेंबर भी हैं और जो नहीं है, जो लोकल सतह पे अपने लोगों के लिए अपने इलाकों में काम कर रही हैं, उनके पास जैसे ही उन्होंने ये चीज़ें देखी तो उन्हें अपनी मदद आपके तहत काम शुरू कर दिया, जैसे कुक्ड फूड का लोगों तक पहुंचाना, लोगों को रेस्क्यू करना, ये कुछ जो उनके अपने वसाइल थे उसमें से उन्होंने कर लिए। अब जबकि गवर्नमेंट और जो इंटरनेशनल इदारे वो सभी ने कहा है कि इतने दिनों के बाद पहुंचे, NHN का जो और तंजीमों का जो रोल है वो ये है कि वो कंटिन्यू इस रोल में एज ए वॉलंटियर अपनी कैपेसिटी और अपने वसाइल से लोगों की वो लोग जो दुखी थे, क्योंकि सिंध के अंदर जो बताते हैं, हमने काफ़ी उसमें लोगों के साथ जो डिस्कशंस किए हैं, उनने 80 साल के लोगों ने भी ये कहा कि हमने कभी इस तरीके का रेन फ्लड नहीं देखा, क्योंकि अगस्त में बरसात शुरू हुई तो जिला खैरपुर में जो खजूर का फसल था अरबों रुपए का, जिसमें लेबर भी आती थी, उसमें बिजनेसमैन भी थे, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट भी होती थी, और बड़ी सतह पे ये कि अरबों का कारोबार था, वो सारा डूब गया। कोई 10% करीब कोई खजूर होती होगी, वरना क्वालिटी सारा उस तरीके से खत्म हो गया। जैसे अगस्त में बरसात बढ़ गई तो लोगों के पास जो क्रॉपिंग सिस्टम है सिंध के अंदर, वो कैश क्रॉप, कॉटन क्रॉप और साथ ही शुगर केन है और बनाना है, बाकी जो सब्जियां और बागात हैं, उसमें ये हुआ कि जो कॉटन क्रॉप है वो तकरीबन 80-90% खत्म हो गया, क्योंकि लोगों की जो उम्मीदें होती है ना, लोगों की जो इलाकों में रूरल एरिया में उनकी जो लाइवलीहुड है जो चलती है, वो खासतौर पर 2-3 चीज़ों पे चलती है। एक उनकी क्रॉपिंग सिस्टम है, दूसरा उनका लाइव स्टॉक है, और तीसरी उनकी सब्जियां है और बागात है। तो इन बरसातों की वजह से जैसे ही बरसात नहीं आई तो लोगों के फसल भी खत्म हो गए, लोगों को जो लाइव स्टॉक था उनके लिए चारा भी खत्म हो गया, और बड़ी जो अहम चीज़ है वो ये है कि लोगों के घर खत्म हो गए। लोग घरों से निकल के, वो लोग जिनमें कभी माइग्रेशन नहीं थी, वो लोग जिनमें कभी ये बरसात देखी नहीं थी, तकरीबन सिंध के 70-80% अजला जो थे वो घरों से निकले, वो जाके भी निकले जिन्होंने कभी माइग्रेशन नहीं की थी। तो इस सूरत हाल में NHN की जो बैकग्राउंड तंजीमें थी और सिविल सोसाइटी थी, उन्हें अपना एक रोल निभाया है। तो वो रोल ये था कि लोगों तक फूड पहुंचाना, उनको रेस्क्यू करना, और साथ ही ये कोशिश की कि गवर्नमेंट के साथ उन्होंने लिंक कर लिया कि गवर्नमेंट कहाँ पे काम तो नहीं कर रही। ये एक रोल था NHN के साथियों का। जैसे ही काम आगे बढ़ा तो उसमें ये हुआ कि NHN के साथियों ने एक प्रूव कर दिया कि नहीं, यूनोचा ने और PTM ने एक चीज कही थी कि हम RNA करना चाहते हैं। इससे पहले PTM ने एक मीटिंग बुलाई अगस्त में, जिसमें इंटरनेशनल NGOs ने शिरकत की थी और NHN की तरफ से भी साथियों ने शिरकत की। वहाँ पे डिस्कशन में ये चीज क्या आई कि इस वक्त जो सूरत लोगों की है इसमें आई क्या कर रही है, NHN क्या कर रहा है और PTM क्या कर रहा है। हमने उनके साथ 2 सजेशन या 3 रखी थी। एक तो PTM में यूनोचा मिल के RNA करवाए पोजिशन में। दूसरी जो चीज है वो ये है कि लोग जहाँ पे वाटर पानी खड़ा है वहाँ पे डी वाटरिंग होनी चाहिए। और थर्ड जो चीज है वो ये है कि लोगों को जल्दी से जल्दी असेसमेंट और रिस्पॉन्स होना चाहिए। चौथी जो चीज थी वो ये थी कि जो NGOs काम कर रही है लोकल, उनको NOC मिलनी चाहिए। तो ये 4 चीजें थी। तो आगे चल के फिर ये होगा, जैसे UN सेक्रेटरी जनरल ने
सिंध का विरोध किया तो उसके बाद ये चीज आई कि नहीं RN होना चाहिए। तो NDMA, PDMA, यूनोचा उनने बातचीत की कि सिंध में हम 13 अजला में RNA करना चाहते हैं। तो NHN ने ये इनिशिएटिव लिया और जितनी भी तंजीमें थी NHN की मेंबरान उन्हीं अजला में से या और अजला में से उनके साथ रब्ता किया कि ये चीज हो रही है, आप इसमें शामिल हो, और उसको सारे इनिशिएटिव को NHN ने लीड किया। और पूरी सिंध के अंदर 300 से ऊपर 2 क्लस्टर से 300 से ऊपर लोग ये वॉलंटियर एचआर कि हम आपको नीड असेसमेंट करके दे रहे हैं और साथ ही व्हीकल भी परामर्श किया। तो इसका मकसद ये है कि हम प्रूव कर चुके हैं, हमारे जो लोकल NGOs हैं या नेशनल हैं वो उनके पास कैपेसिटी है काम करने की, और काम करने के साथ अगर वसाइल नहीं भी जितने भी हम काम कर सकते हैं। दूसरी जो अहम चीज है वो ये है कि NHN इसी इनिशिएटिव लेने के बाद फिर काफी जो मीटिंग्स हुई उसमें स्पेशली PDMA के साथ वो ये हुआ कि यूनिवर्सिटी का मामला था कि PDMA ने एक नोटिफिकेशन निकाली कि हर यूनिवर्सिटी ले और उसके लिए फिर ये चीजें होंगी, कोई 12-13 के करीब थी। उसके ऊपर फिर NHN, PHF और यूनोचा हमने वहां पे PDMA के साथ मीटिंग की, वो 4-5 घंटे एक मरतबा चली, फिर दूसरी मरतबा चली, जिसमें जाकर उन्होंने कहा कि ठीक है हम समझते हैं कि PHF की जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं और जो NHN की मेंबर तंजीम है, तो NHN की जो मेंबर तंजीम है वो सब हमें सिर्फ एक लेटर सादा सा लिखे और साथ ही जो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उसके लिए आप वो एरिया आइडेंटिफाई कर लें ताकि हमको पता चले कि कहाँ पे काम हो रहा है। तो उसकी वजह से ये हुआ कि तंजीमों के लिए पूरी सिंध में आसानी हो गई जो NHN की मेंबर तंजीमें थी। बाद में चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग हुई जिसमें जोलिन साहब भी आए थे, ये थे यूनोचा के रीजनल पॉइंटर थे, उसमें यून की तंजीमें भी थी, काफी डिस्कशन चला जिसमें कमिश्नर साहब को नेटवर्क वर्किंग में लिया गया था, डी साहब को लिया गया था। जब बात इस पे आई कि DDMA की सतह पे मीटिंग्स होनी चाहिए क्लस्टर वाइज, तो उसमें फिर हमने उनको सजेशंस दी थी कि NHN की जितनी भी तंजीमें हैं जहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्लस्टर बन रहा है उसमें आप उनको एक तंजीम को उसको ले लें ताकि वो उसमें आके उस क्लस्टर में आपके साथ बैठे और उन चीजों की डिस्कशन करें। उसमें DG PDMA सलमान साहब ने सपोर्ट किया कि नहीं NHN का साथी होना चाहिए। उसके बाद NHN ने हर जिले से रब्ता किया और फिर उनको वो जो PEC की कुछ तंजीमें थी उनको जहाँ पे नहीं था तो वहाँ पे उनको नॉमिनेशन जिले की सतह पे दे दिए। अभी जो NHN का रोल है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिंपल बजट में और अच्छे तरीके से क्वालिटी से और लोगों तक जहाँ तक इंटरनेशनल तारीफ पहुंचे नहीं है वहां तक लोगों की सहायता की है, सपोर्ट की है, रेस्पॉन्स किया है। अभी जो आम चीज आती है वो ये आ रही है कि हम समझते हैं कि इसके ऊपर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है खासतौर पर UN, इंटरनेशनल इदारे हैं वो और नेशनल NGO और NHN इसके ऊपर सोचना चाहिए कि क्या वो इदारे जो लोकल सतह पे हैं वो अगर काम कर रहे हैं तो उनका कितना खर्चा आ रहा है, जो इंटरनेशनल उनका कितना खर्चा आ रहा है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं, जो साथ में बात की थी आप कैपेसिटी शेयरिंग होनी चाहिए। तो उसके साथ मैं समझता हूँ कैपेसिटी शेयरिंग के साथ फिनेंशियल शेयरिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो बजट यहाँ पे डिस्कशन हुई है कि UN के इदारे जो है वो फंडिंग से कोई 60% लेके जा रहे हैं स्ट्रक्चर में, तो जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो 30% लेके जा रहे हैं, तो बाकी बचा 10%। अगर वो नेशनल और लोकल NGOs को 10% जा रहा है तो उसमें से आप उसकी मैनेजमेंट कास्ट निकाल लें, बाकी कम्युनिटी को क्या जा रहा है। हम वो स्लोगन दे रहे हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन इदारे हैं, हम जस्टिस पे चलते हैं, हम इक्विटी करते हैं। तो मेरे समझ में यह है कि हम कैपेसिटी शेयरिंग के साथ फाइनेंशियल शेयरिंग है उसमें भी हम जस्टिस करें कि वो लोग जो काम कर रहे हैं जिनके पास एक विजन है, यूनोचा के पास भी विजन है, इंटरनेशनल के पास भी विजन, मगर जो लोकल लोग बैठे हैं वो वहां पे होंगे, उन लोगों को लिए काम कर रहे हैं जहाँ पे वो उनके रूट्स है। तो इसके ऊपर थोड़ा देखने की जरूरत है कि इस वक्त जो NHN है उसने प्रूव कर लिया है कि नहीं, सिंध के जितने भी अजला हैं जहाँ पे फ्लड आई है वहां पे सिंध के अंदर 81 ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से 74 ऑर्गेनाइजेशन या 70 के करीब जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है थ्रू अपनी मदद आपके तहत, डोनेशन के तहत, गवर्नमेंट साथ मिलके काम किया है। फिर उन इदारों के साथ भी काम किया है जिन्होंने सिर्फ
ताकि हम आपको फंड आइडेंटिफाई कर देंगे। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन उनके जितने भी वो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो लोकल एनजीओ ने बर्दाश्त किए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि एनएचएन का जो रोल है उसको तो नेशनल और इंटरनेशनल मान लिया गया है, और इस मानने के बाद आगे जो चीज बढ़ती है वो ये है कि फाइनेंशियल जो शेयरिंग है उसमें वो एनजीओ जो काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ सोचना चाहिए कि हम उसके लिए क्या प्लानिंग करें। वो प्लानिंग जो शॉर्ट टर्म नहीं मगर लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। शुक्रिया वली साहब, टाइम चूंकि बहुत कम है, अभी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं करेंगे, और ये हमारे चेयरपर्सन जो हैं वो आपकी टेबलों पे हैं, तो आप इंडिविजुअली क्वेश्चंस कर सकते हैं उनसे। लेकिन जो जो पूरी हमारी डिबेट के बाद जो चीज़ें निकली हैं, 3-4 पॉइंट हैं, जो मैं पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन चंद एक पॉइंट्स हैं, खास तौर पर जो लोकलाइजेशन ऑफ एड है कि मेजर चंक जो है वो कहीं और रह जाता है, और जो लोकल इदारे और इवन के कम्युनिटी जो एक्चुअल विक्टिम है वो 10% से फिर 5% के दरमियान जो है उनका शेयर बनता है। तो इसको सोचने की जरूरत है, और वो कौन से ऐसे लेयर्स हैं जहां पर फंडिंग जो है वो उनको छाना लगता है। तो इसके ऊपर एनएचएन का रोल बनता है, एडवोकेसी का और बाकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का। और जो पॉइंट निकला है वो एंटिसिपेटरी मॉडल का है कि क्योंकि ये जो डिजास्टर का फेनोमिना है वो सीजनल नहीं है, अराउंड द ईयर है, तो इसको एंटिसिपेटरी मॉडल के तौर पर हम डील करें, खास तौर पर जो इंटरनेशनल इदारे हैं और लोकल इदारे हैं, ताकि टाइमली रिस्पॉन्स कर सके। और स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लोकल इंस्टीट्यूशन जैसे डीडीएमए है, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, और जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, सीबीओज हैं, कम्युनिटी विलेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है। तो इन्हीं बातों के साथ हम आज का ये सेशन क्लोज करते हैं। माजरत के साथ काफी सजेशंस आ रही हैं, लेकिन हम चूंकि टाइम की कंस्ट्रेंट है, लेकिन एक अनाउंसमेंट मैं करूंगा इमाद साहब, खासतौर पर जो एनएचएन के मेंबर्स हैं जिन्होंने सुबह चेकआउट करना है उनके लिए एक अनाउंसमेंट है मैनेजमेंट की तरफ से कि सुबह 9:30 बजे उन्होंने हर हाल चेकआउट करना है, और जो रेडी पाकिस्तान के इवेंट में लोग रह रहेंगे वो कंटिन्यू यहाँ स्टे रहेगा। थैंक यू सो मच। सारे पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हम उठ खड़े हो जाते हैं और इनके लिए एक राउंड ऑफ अप्लास, क्योंकि ये वो हीरोज हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया है। हम तो यहाँ सिर्फ कोऑर्डिनेशन कर रहे थे और इन दोस्तों ने इस सारे ऑपरेशन को लीड किया है आप लोगों के साथ मिलकर। तो इनके लिए एक बार फिर से भरपूर हम उसके ऊपर बात करेंगे जो अभी इकबाल साहब आपको बता चुके हैं। डीआरएफ को डब्ल्यूएचएस ने 2 साल 3 साल लीड किया, उसके ऊपर पायलट प्रोग्राम किया जो कि एंटिसिपेटरी एक्शंस के ऊपर था। स्पेसिफिकली वी विल टॉक अबाउट दैट, और बिफोर गोइंग टू द प्रेजेंटेशन आई वुड आस्क आवर आईटी फैसिलिटेटर कि हम काइंडली अगर वीडियो एक चला दें जो कि डीआरएफ के बारे में है, उसके बाद विल गो फॉर द प्रेजेंटेशन एंड एट द एंड विल हैव अ स्लाइटली स्मॉल वीडियो जो कि आप लोगों को रेडी पाकिस्तान के बारे में बताएगी। The anticipatory actions and response approach combines a set of actions taken to prevent or mitigate potential disaster impacts before a shock or before acute impacts are felt. Technological progress and state-of-the-art forecasting analytics make it possible to predict with increasing accuracy when and where a disaster might occur. The hazard prediction scientific models and tools create critical opportunities for anticipatory action that save lives and livelihoods, reducing humanitarian needs. This approach is translated into a concept by the START network, NWHH, Wealth, Hunger, and Health. It is implemented through a coherent and locally led initiative called Resilient Early Action to Disasters around the year in Pakistan, precisely known as Ready Pakistan, via Disaster Risk Finance, DRF program. The disaster risk financing approach is that once we can predict natural hazards through scientific models, why not to respond before they happen? Having that at the back of our mind, we designed a system
which was primarily supported by the overall theme of forecast-based financing, very much included in the Sendai Framework of Action, which is an international disaster risk reduction framework signed by all the international organizations and the countries. It has become a success story in Pakistan, and flexible funds based on predetermined scientific triggers of three hazard models. Heat wave, drought, and floods are available for local non-government organizations. This kind of disaster risk finance (DRF) initiative is the first of its kind in Pakistan. डिजास्टर रिस्क फाइनेंस के अंडर फिर हम तो इमरजेंसी होने से पहले पार्टनर्स या मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप कंटीजेंसी प्लानिंग कर देते हैं, बजट एलोकेशन कर देते हैं, ताकि जैसे ही हमारा मॉडल ट्रिगर हो किसी भी इमरजेंसी, भले वो फ्लड की है, हीट वेव की है या ड्राउट की है, तो हम मिनिमम टाइम में फंड मोबिलाइज करके लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को फौरन ट्रांसफर करते हैं, ताकि वो विद इन 24 आवर्स जो फील्ड में अपना काम इनिशिएट कर सकें। When there is a trigger, then we are to respond. But before this, communities are prioritizing their needs. Even they are identifying their needs, and this process strengthens them. This process organizes them. They then not are dependent only on the civil society organizations. With self-help, they do many things. The idea to work in the area of disaster risk reduction is not only rooted in the absolute necessity to be able to respond to frequent disasters in Pakistan, but it is also linked with the Ready Pakistan's strategic orientation to engage more in Pakistan because of insufficient socio-economic development, lack of access to basic amenities compounded by exposure to climate change-related risks, and frequent natural disasters. This approach helps unlock new forms of funding mechanisms to enable effective humanitarian assistance. This approach further ensures adequate funding is available through a wide range of financial instruments well before natural hazards threaten communities and minimize future risks. So far in Pakistan, 3 alerts have been activated. In January 2022, Nawada was hit by winter floods, and alert for 135,000 GBP was activated, and the funds were given to local organization hands for the response. The local NGOs are now able to draw on this new source of funding to design and implement early actions to minimize risks faced by communities. The DRF concept work through customized scientific hazard prediction models, which allow time quantification of disaster risks for pre-positioning and releasing funds before the actual hazard crisis event occurs to undertake anticipatory early actions. Since 2017, our members have been following the phenomena of heat waves. We've been tracking heat waves with scientific models and working with civil society, communities and local authorities to respond before a heat wave hits the ground. We're quite proud to be some of the first globally that have worked on this phenomenon. रेडी पाकिस्तान स्टार नेटवर्क में गर्मियों से बच्चों को जितने ना सब तरीके देते हैं गर्मी तो आने से पहले उन्हें सामने चीज़ें मुहैया कर देती है गर्मी है जब कम है जिससे छतरी वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी तो छतरी वगैरह यूज़ कर दे जितने छतरी का काम नहीं है तो टोपी पहन के काम करेंगे पानी ठंडा जो बोतल जड़ी जितनी है उनके पानी ठंडा करके इनको वगैरह छाड़ के कोई बंदा ना 4-5 आदमी लोग 4-5 आदमी बना के पी लें रेडी पाकिस्तान ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਗਈ ਤੌਲੀਆ ਦੀ ਗਿਆ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਗਿਆ ORS ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਦੀ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Pakistan is suffering from severe drought since 20 years, especially province of Sindh and Balochistan. In this regard, Leading Pakistan responded and sent last year, and it was a successful plan. In Pakistan, it was the first anticipation response to support the most vulnerable communities in
and enable them to stand and cope with the negative effects of the drought situation. संगीन जाम थान खादो खोराक बनी मथे थान बनी वार पोखा न है मन तो दुका गाड़ी सूरत है स्टार नेटवर्क ना आए हुए टैक्स से थान मदद मिली है करे. And during these years, we responded to heat wave, drought, and flood. In Muzaffarabad and recently in 2022 flood, we were the first ones to be on the ground and timely, it was very quickly, we act transparently, and that's definitely that fund saves life and the livelihood of the people. Ready Pakistan has also been a pioneer in disaster risk financing, really getting to the heart of those risk models, whether it's drought or heat waves or floods, getting together with the Met Office, with the national government, with local communities to understand the risks, to model the risks, and then to act on the risks. We were successfully able to advocate for anticipatory action as the best approach in Pakistan, which requires addressing the need of the time. The cost effectiveness of the AA approach is very important. I think we were able to do that, or we were able to showcase that through actual action. That it was through the efforts of Ready Pakistan and the NHN members in Ready Pakistan that anticipatory action featured as a key component of the ASRC for Pakistan in 2021. Ready Pakistan is making Pakistan and Pakistani communities better equipped and ready to face future climate challenges. थैंक यू सो वेरी मच. आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री एक देखी जिसके ऊपर पिछले हमारे 2 साल काफी सारा काम हुआ, 5 साल में इसके अंदर डिस्कशन हुई. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द प्रेजेंटेशन दैट इज रिगार्डिंग डीआरएफ रिस्क फाइनेंसिंग. मेरे ख्याल में जितनी डिस्कशन हमारी हो चुकी है यहाँ पे उसके अंदर मुझे दोबारा डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. वेदर आई नीड नॉट टू गो इनटू डिटेल्स, विल जस्ट गो थ्रू द स्लाइड्स. एक तो टाइम हमारे पास थोड़ा सा स्लॉट थोड़ा है तो विल जस्ट रन आउट. बेसिकली that has got 3 pillars जिसके ऊपर DRF काम करता है. One is quantifying risk. आप रिस्क को क्वांटिफाई करते हैं कि whether the risk उसकी मैग्नीट्यूड रिस्क का कितना है, whether it is floods, whether it is heat wave or whether it is drought. तीनों की अपनी अपनी साइंटिफिक मॉडलिंग होती है जिसके ऊपर हम प्रिडिक्ट करते होते हैं या फोरकास्ट करते होते हैं. फोरकास्ट करके उसके ऊपर अपनी रिसोर्सेज को प्री पोजिशन करते होते हैं ताकि अगर फॉर गॉड फॉरबिड कोई डिजास्टर आता है उसको हम मिनिमम टाइम के अंदर मिटिगेट कर सकें उसको हम. और इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह बताऊंगा जिस तरह आई हैव बीन लुकिंग डिजास्टर फॉर ऑलमोस्ट 10-15 years नाउ. तो जो पहले हमारे पास रिसोर्सेज के ज़्यादा होता था और काफ़ी सारा टाइम लग जाता था, जब ऑन ग्राउंड चीज़ें जाती थी तो उस वक्त तक सब कुछ सिचुएशन चेंज होती थी. फॉर दिस मॉडल स्पेसिफिकली we have responded in 12 hours shortest time on ground. उसके साथ फ्लड्स के अंदर within 24 to 48 hours. So it was a huge success piloting this program from the future coordination. Second is pre-planning the activity. You need to pre-plan that activity. जितना भी आपने देखा heat wave के ऊपर आपके programs reducible launch हो जाते हैं, आपकी communities को warn कर दिया जाता है. उसके अंदर awareness programs होते हैं कि you have to take in water intake इसके अंदर आपको ज़्यादा रखनी है. Specifically talking about floods, आप उन एरियाज को खाली करा देते हैं जहाँ पे आबादी होती है और उसको वहाँ पे फ्लड आने का खतरा होता है. प्री पोजिशन करने का फायदा ये होता है. और उसके बाद फाइनेंसिंग को प्री पोजिशन करने का, बिकॉज हमारे पास प्रॉब्लम ये होता है कि फाइनेंसिंग हमारे पास रिलीज नहीं हुए होते और इसकी वजह से लोकल एनजीओज जो हम स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकलाइजेशन उसको मुराद पहुँचते पहुँचते टाइम लगता है जिसकी वजह से डिलेज आते हैं. तो उसके अंदर फाइनेंसिंग भी पहले हमने प्री पोजिशन कर ली थी. उसके बाद प्री प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज हो चुका था और एट द टाइम ऑफ डिजास्टर वी वर देयर ऑन द ग्राउंड. सो इट वाज ऑल टुगेदर अ वेरी गुड पायलट प्रोग्राम जो नेक्स्ट आगे
रेडी पाकिस्तान इसको टेक ओवर करेंगे और सो देयर वर थ्री मेन हैजर्ड्स जिसको हम देख रहे थे, हीट वेव, फ्लड और ड्राउट। आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीबॉडी आउट देयर। हीट वेव के अंदर हम लोगों ने ट्रिगर मॉडल जो बिल्ड किया था, बेसिकली नॉट टॉकिंग अबाउट कराची के अंदर जो हीट मॉडल लेते हैं वो स्पेसिफिकली टेम्परेचर को लेते हैं, दे डोंट टेक इन अकाउंट द ह्यूमिडिटी लेवल। तो हीट वेव के अंदर बेसिकली ह्यूमिडिटी लेवल और हीट टेम्परेचर्स को दोनों को मॉनिटर किया। तो लाइन थे हमारे जिसके अंदर से हमने कराची को भी और 5 टाइम्स हम लोगों ने हीट वेव को भी रिस्पॉन्ड बैक किया। फ्लड्स के अंदर 2022 का जो हमारा फ्लड था, हमने उसको भी रिस्पॉन्ड बैक किया, जो कि आवाज साहब भी बता चुके हैं, आपने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा। ड्राउट के अंदर भी स्पेसिफिकली कंसर्न वर्ल्ड वाइड के ताउत से हम लोगों ने काम किया इन 2021-22 and it was a very successful project. Now moving towards the next slide, पाकिस्तान अब ये है hazard prediction models, heat wave, flood and drought, timely availability of funds जिसकी मैंने अभी बात की थी, और उसके बाद coordination and governance structure जिसके अंदर हम फर्दर आगे जाके बात करेंगे TWGs की, जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी थी, make it more accountable, to make it more clearer, जो आपकी accountability कर सकते हैं, वो सारा स्ट्रक्चर जो गवर्नेंस और कोऑर्डिनेशन के अंदर वो होता है। और प्रिपेयर्डनेस एंड कॉन्टिजेंसी प्लानिंग के अंदर इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम जो कि हम 3 पिलर्स को साथ लेके आए थे, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट, आपकी सिविल सोसाइटी और यूएन का डाटा यूज हुआ था जो लास्ट कॉन्टिजेंसी प्लानिंग हुई थी फ्लड्स की। अनफॉर्चुनेटली फ्लड्स वर नॉट रिवरराइन फ्लड्स, इट वाज बेस्ड ऑन रिवरराइन फ्लड्स, लेकिन फ्लैश फ्लडिंग हुई। एंड हमने पहले भी हमारे यहाँ पे बात कर रहे थे कि इट स्टार्टेड फ्रॉम द साउथ, नॉट फ्रॉम द नॉर्थ दिस टाइम। ठीक है, तो हमें ये इस चीज़ का भी अंदाजा हो गया कि रिवरराइन फ्लडिंग और फ्लैश फ्लडिंग में फर्क क्या है और डिजास्टर कितना हो सकता है। टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली फ्लैश फ्लडिंग, तो फिर मंचर लेक ब्रीच की, फिर तादू के काफ़ी सारे एरियाज उसके अंदर है। तो दीज आर ऑल अलाइंड पोजीशन। पाकिस्तान रेडी पाकिस्तान का हब जो है वो इन चीज़ों को अलाइन साथ करके चलेगा साथ। द विजन ऑफ दिस इज अ प्रोएक्टिव, resilient, people-centered, locally led and innovative humanitarian ecosystem that addresses emerging challenges through strengthened preparedness and predictable response to any crisis. इससे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आई डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स। लीडरशिप के अंदर आती है जिसके अंदर हमने जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके अंदर गाइडेड बाय द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, जिसके अंदर 2 नेशनल एनजीओस के मेंबर्स थे, 2 नेशनल ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क के रिप्रेजेंटेटिव NHN के, along with 4 INGOs and PHF participation। साथ में बात करते हैं वाइडर एंगेजमेंट की। NHC हाउस ऑफ पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन फोरम, PHF, NHN, NDME and the PDMs, they were all on board, जिसकी वजह से हमारा ये बहुत सक्सेसफुल किया प्रोग्राम, बिकॉज टेकिंग इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम जिसके अंदर सारी बॉडीज इकट्ठी हुई थी, जिसके अंदर आपकी सिविल सोसाइटी भी थी, आपका गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी और आपके डिफरेंट और जो INGOs एंड फोरम्स हैं वो सारे इन्वॉल्व थे। This is the governance structure which we have been running in the area. Okay, पाकिस्तान स्टार्टअप था, उसकी नेशनल स्टीयरिंग काम कर रही थी, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के साथ स्टार्ट जो यूके टीम थी उसके, और नीचे TWG से टेक्निकल वर्किंग ग्रुप स्पेसिफिकली अबाउट द फ्लड, ड्राउट एंड हीट वेव, जिसके अंदर लोकल और नेशनल NGOs की रिप्रेजेंटेशन दोनों की थी। स्टार्ट फंड था जो कि फंड को एट द मोमेंट ऑफ डिजास्टर रिलीज करते थे ऑन द ट्रिगर्स based on scientific models. Establish a well-defined and organized governance structure at country level that includes NSC and hazard-specific TWGs. TWGs के ऊपर हम बात करने के लिए बुलाएंगे बाबर साहब को for flood and for heat wave. शहबाज साहब भी आते हैं drought के ऊपर specifically. Designing and building up operationalize 3 hazards trigger-based models for floods, drought, and heat wave. Successfully implemented 9 anticipatory response over 2 years, 7 of the heat wave, for the heat wave, 1 for flood and 1 for drought. जो कि concern worldwide. Provide systems to start fund team in raising 3 successful alerts, including flood in 2022. जो कि pre-position funds थे और
स्पेसिफिकली एंटीसिपेटरी एक्शन के लिए थे, बट अगर एंटीसिपेटरी एक्शन पे वो यूज नहीं हुए तो हमने उनको अलाइन कर लिया फॉर द क्लास 2022। दिस इज ओवरऑल जो हमारा सक्सेस रहा, वो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे साथ की नाउ दैट हैज इंक्रीज। रेडी पाकिस्तान के अंदर आके वो बहुत ज़्यादा चीज़ हो रही है, हमारा बता रहे local capacities will be built, and that is basically we are all here to build the local capacities and to support to serve people who are suffering. Over 689,000 pounds were distributed. Three main hazards उनके सारे ecosystems और उनकी जितनी scientific modeling हुई वो बनाए गए. But 12 million people were basically they were protected, and their system helped them mitigate the disaster. Allocating 47% for the local and local partners, 47% would that goes to local partners for the implementation. Now going towards DRF program achievements, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन we'll just go through training and capacity building for all TWG members on anticipatory response, DRF building blocks and localization of hazard models. लोकलाइजेशन ऑफ हैजर्ड मॉडल्स को बात करना जरूरी इसलिए से है कि एट टाइम्स होता है कि कहीं पे हीट वेव उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती जिस तरह दूसरे एरिया में कर रही होती है, तो लोकलाइज होने का जिस तरह जैकबाबाद में उस तरह नहीं कर रही होगी जिस तरह पिंडी साल होती है। तो स्पेसिफिकली लोकलाइज जो आपके प्रोविंसेस होते हैं वो आपको जो एट रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स बताते हैं उसके अंदर स्पेसिफिकली गोइंग थ्रू द गवर्नमेंट वो हम उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। Representing Pakistan DRF system at national, regional, and global events, allocating and aligning DRF system with United Nations by inclusion of anticipatory responses in the Syrian program cycle and UN Emergency Response Plan 2021. इसके अंदर 2021 के अंदर जो contingency planning हुई थी उसके अंदर भी UN का ताउन हमारे साथ रहा था, जिसके अंदर UN OCHA was the main source to provide the data. Recognition of DRF system by UNRC office and OCHA, an opportunity for coordination of DRR, TWG at national level and co-chair. Recognition of Pakistan DRF model at regional and global level. Recognition of DRF system nationally, national and provincial disaster management authorities. MOU उनके साथ साइन हो चुके हैं हम लोगों के, specifically talking about the MDMA and PDMAs. Actively assisting and supporting startups or partners in other countries to build their DRF systems. बांग्लादेश के अंदर और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए थे, जबकि नीला और वो थी फरहान थे जो कि जाके रिप्रेजेंट किया था पाकिस्तान स्टार्टअप को वहाँ। Establishing a network of researchers and academia, इसके अंदर हम लोगों ने academia को basically academia के काफी सारे researchers जो होते हैं उनकी रिसर्च इसके अंदर काम आती है, जो उनके relevant to hydrometeorological models होते हैं जिनको हम जिनके ऊपर काम करके फ्लड्स को देखते हैं, ड्राउट को और हीट वेव को मॉनिटर कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकली इस सिस्टम के अंदर हम लोगों ने एकेडेमिया के लोग जो कि PhD और एफएल्स थे स्पेसिफिक टू देयर फील्ड्स उनको इन्वॉल्व किया ताकि हम दो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स को मर्ज कर सकें, एक एकेडेमिया रिसर्च जो कि हमारे मुल्क में बहुत कम होती है, लेकिन दिस टाइम DRF ने ऑलमोस्ट 12 स्कॉलरशिप्स ली ऑन द रिसर्च वर्क ऑन एंटिसिपेटरी एक्शंस, और जिसके अंदर से 4 PhDs को थी और 8 जो थी वो MPhil डॉक्टरेट्स। मेंबरशिप ड्राइव जो achievements हमारे रेडी पाकिस्तान की हैं, providing opportunities to the local NGOs to become members for Ready Pakistan, hub registration, formulating hub, legal document, TORs, incubation fund, proposals and budgets, provide support in due diligence for Ready Pakistan membership for initial stage work, assisting in drafting TORs and hiring the hub coordinator, resource mobilization of 4.2 million euros under GFO General German Federal Foreign Office, जिसको अभी हम implement कर रहे हैं specifically in the flood affected areas. The project is still going on. Advocacy supporting NSC at local, national and international localization events. These are the midterm to long-term plans. Administration is about the final. Now
बेसिकली वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, और इसके मुताबिक अगर क्वेश्चंस हुए उसको हम बाद में लेंगे, लेकिन आई वुड आस्क जो TWGs के हमारे मेंबर्स हैं, इफ दे कैन जस्ट कम अप और अपनी टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स के शिवा साहब हो गए क्लाउड के ऊपर, बाबर साहब हो गए फॉर फ्लड, और नायरा होगी फॉर हीट वेव। तो आई वुड आस्क देम टू काइंडली कम ओवर, थोड़ी सी जल्दी होगी हमें। मैनेजमेंट को कहें ये 3 चेयर रख दे और तो टेक्निकल वर्किंग ग्रुप के चेयर्स आपको प्रोसेस भी बता देंगे कि वो क्या प्रोसेसेस हैं, और फिर हम चाहेंगे कि हमारे मेंबर्स इसका पार्ट बने, तो वो भी नहीं बोली Thank you so much. हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। We are work with the national organization Hands Pakistan as an executive manager, और Hands 42 years से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, both on development and in humanitarian sectors. रेडी पाकिस्तान का हम मेंबर हैं, मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है हैंड्स पाकिस्तान, और हम लोग इस वक्त जो पाकिस्तान हब के हवाले से काम कर रहे हैं वो बेसिकली लोकल नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो कि कंट्री में ऑपरेट कर रही हैं और इस हब को देख रही हैं। हम जब इस टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का पार्ट बने थे 2020 की बात है, और जब ये नया कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आया था तो उससे पहले पाकिस्तान में प्रोएक्टिव अप्रोच की बजाय रिएक्टिव अप्रोच होती थी, यानी जब कोई डिजास्टर हो जाता था उसके बाद हम लोग उसको रिस्पॉन्स करते थे। तो ये एक बड़ा इनोवेटिव सा मॉडल था जिसमें आप उसके रिस्पॉन्स कर जो फ्लड आने से या हीट वेव आने से पहले या ड्राउट आने से पहले उसके आप तैयारी करते हैं, लोगों को बताते हैं, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं, और उस हवाले से जो है उसकी रोकथाम ताकि नुकसान कम से कम हो। उसने तो डिजास्टर ने तो आना ही आना है, क्योंकि हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो इतनी ज़्यादा इनप्रोन हो चुकी हैं डिजास्टर्स के लिए कि वो उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम उसको मैनेज कर सकते हैं कि ताकि हमारा कम से कम नुकसान हो। जो टेक्निकल वर्किंग ग्रुप है हीट वेव का या ड्राउट का या फ्लड्स का, इसका जो चेयर इसको करते हैं वो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी चेयर करती है, जिसमें साहब यहाँ पर उसके चेयरपर्सन है, और हर टेक्निकल वर्किंग ग्रुप जो है उसका चेयर और को चेयर है। उसके अंदर नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं इन ऑल दीज रिस्पेक्टिव टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स। इसकी ब्यूटी ये है कि हम लोकल लेवल के ऊपर विद इन द ग्रुप हम कोई भी डिसीजन कर सकते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को अकॉर्डिंग टू द नीड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें इन्फ्लुएंस किसी का भी नहीं होता, ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, ना हमें कहीं एक्सटर्नल कोई हमें प्रेशर होता है। इसके अंदर टेक्निकल वर्किंग ग्रुप खुद डिसीजन मेकिंग करता है कि हमने क्या करना है आगे फ्यूचर में। और जब भी सीज़न शुरू होने से पहले क्योंकि इसको भी होस्ट कर रहे थे WHH एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देयर टीम, दे आर वेरी डेडिकेटेड पीपल। हर सीज़न शुरू होने से पहले टेक्निकल वर्किंग ग्रुप की जो है वो चेयर्स को चेयर्स और जो होस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है वो मीटिंग्स करते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव जो है वो हैजर्ड, वल्नरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट होती है तीनों हैजर्ड्स की, और उसके मुताबिक कंटीजेंसी प्लानिंग जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं जो टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का पार्ट है। इसके अंदर मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, इसके अंदर ऑब्जर्वर्स भी हैं, और इसके अंदर जो है वो एसोसिएट मेंबर्स भी मौजूद हैं इन टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स के अंदर। तो बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि किसी भी डिजास्टर के आने से पहले आप क्या सजेस्ट करते हैं उन जोग्राफिकल लोकेशंस को जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं फॉर रिस्पॉन्डिंग टू दीज डिजास्टर्स। तो ये तीनों जो है डिजास्टर्स के लिए जो है सेम जो है वो एक्सरसाइज होती है, चाहे वो हीट वेव हो, फ्लड हो या वो ड्राउट हो। तो चूंकि मैं इस वक्त हीट वेव टेक्निकल वर्किंग ग्रुप को को-चेयर कर रही हूँ, तो थोड़ी सी आपके साथ उसकी प्रोग्रेस शेयर कर दूँ कि हमने 2020 से 2022 तक कितने एंटिसिपेटेड रिस्पॉन्सेज किए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि 11 मेंबर्स हैं टेक्निकल वर्किंग ग्रुप में, 11 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इस वक्त 15 तक मुश्तमिल होता है, लेकिन 11 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसके अंदर हमारे पास 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 3 नेशनल हैं और 3 लोकल ऑर्गेनाइजेशन हैं। इसके अलावा 17 हमारे पास मेंबर्स ऐसे हैं जो कि एसोसिएट मेंबर्स हैं या एज एन ऑब्जर्वर जो हैं वो हमारे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दीज मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस एंड मेंबर्स के जो कि हमेशा से अवेलेबल होते हैं हर किस्म की एक्टिविटी के लिए।
हमने सबसे पहला एंटिसिपेटरी हीट रिस्पांस किया था 2020 के अंदर कराची के अंदर, जो कि 4.5 मिलियन पॉपुलेशन को हमने, क्योंकि कोविड का दौर था और आप कोई इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी या कम्युनिटी के साथ कोई इंटरेक्शन कर नहीं सकते थे, तो उसमें हमने सारी चीज़ें जो थी वो फ़ोन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू तमाम इन्फॉर्मेशन जो थी वो हमने पहुंचाई थी। तो ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन पॉपुलेशन को हमने वो मैसेजेस दिए थे कि कैसे आपने प्रिवेंशन करनी है हीट वेव से। और उसका जो हमने टेस्ट किया था कि किस हद तक हमारी ये इंटरवेंशन कामयाब हुई, तो हमारा कैप जो था वो सर्वे हुआ था, नॉलेज एप्टीट्यूड और कैप सर्वे प्रैक्टिसेस के हवाले से, कि लोगों ने कितना याद रखा, कितना उसको प्रैक्टिस किया और कितना उनका एटीट्यूड जो था या एप्टीट्यूड जो था वो चेंज हुआ उसके मुताबिक। तो उसकी भी बड़ी अच्छी हमारे पास फाइंडिंग आई। 50 to 60% लोगों ने उसको याद रखा, उसको प्रैक्टिस किया और उन्होंने कहा कि हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन पहले नहीं थी। ये तो 2020 का रिस्पांस हो गया। 2021 के अंदर हमने किया था ब्राइट स्टार डेवलपमेंट सोसाइटी BSDS भी यहाँ पे जना सा बैठे हैं, तो इनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। इन्होंने तो वहाँ पे बाकायदा जो है वो फैसिलिटी बनाई थी, जिसमें इन्होंने शेडेड और कूलिंग शेडेड प्लेसेस थी, कूलिंग शेल्टर्स थे, हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स के ऊपर इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन थी, मैनेजमेंट थी। इसके अलावा कुछ जो है इन्होंने NFIs जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इनका भी बड़ी अच्छी एक स्टडी थी, इसकी भी थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग की गई थी और काफ़ी इन्होंने भी जो है वो ऑलमोस्ट आई थिंक